Namaste. India is my life. The soil of India is my highest heaven. The good of India is my good. These words by Swami Vivekanand perfectly encapsulate the need to uphold the values of Indian ethos and honor the spirit of belongingness to this great civilization called Bharat. A very good evening. I, Himangi Sinha, welcome you all to the inaugural edition of Hum Bharatiya, a global dialogue series. In the spirit of our nation's preamble, we, the people of India, the Hum Bharatiya dialogue series, aim to celebrate our diverse culture, heritage, and unity through meaningful conversation that resonate with the essence of our constitution. हम भारतीय हमारी पहचान भी है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी। यह एक कर्तव्य का आह्वान भी है और राष्ट्रीय अस्मिता की बुनियाद भी। यह विश्व को भारत से मिलाने का जतन भी है, भारतीय संस्कृति के स्वरूप का मनन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस वैश्विक संवाद श्रृंखला के पहले संस्करण में हमारे साथ माननीय श्री अगस्त इंद्र उदयान जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे साथ विशिष्ट पैनलिस्ट हैं, सम्मानित अतिथि हैं। इन सबकी उपस्थिति हमें अनुग्रहित कर रही है। मैं एक बार फिर आप सबका इस वैश्विक यात्रा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत आभार और आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। Before moving ahead, I would like to talk briefly about World Intellectual Foundation. The journey of the World Intellectual Foundation has been a journey of putting vision into action. The foundation was established on January 2020, and in last 4 years, the organization has been able to produce impactful policy and research papers. Our goal is to generate even stronger policy initiatives, incorporating dynamic, comprehensive recommendations that can be effectively implemented. To delve deeper into the works of the foundation, I would like to invite our strategy consultant, Ms. Iram Mirza, to the stage. Iram is a well-known name in the field of journalism and strategy consultancy. Iram Mirza is a creative thinker, and she is a leading light in the field of journalism. Her innovative ideas, intervention on climate change in Meghalaya is winning international accolades. I invite Iram. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to extend a very warm welcome to all our guests who've taken their precious time. This dialogue and a critical conversation today. I'm sure after we've immersed ourselves in multiple perspectives that we're all going to share and point of views and reimagine thinking in this forum, we'll all go back with a very refreshed outlook on a very strategic region of our country, Kashmir, and its renewed vigor in contributing towards India's exponential leap in the world. I would also like to take this opportunity to take all of you through what we call internally the nervous system of World Intellectual Foundation, a think tank that frames a new kind of India-led and India-imbued public consciousness by researching, reframing, and positioning multiple indigenous and Indian perspectives in the global context. And then launching these very authentic conversations into the public and policy mindscape. As you can see, this is what we call is a mood board, a wall of all the different topics and critical issues of the 21st century that we've tried to collect, synthesize, find solutionary recommendations, and evolve a new form of thinking to solve these challenges and also highlight what we call the super trends of the future. With the advent of climate change, depleting resources, industrialization of agriculture, and burgeoning population, food security remains a pressing concern for the world. A paper on the subject shows a future compass to food sovereignty of the future. In the volatile world of today, we're looking at a need for reimagination of societal structures and relationships, along with renewal of its relationships with different economic actors of our times.
market, government, and its citizenry. The growth needs to adapt a new meaning, that of equity and justness. Our work on creating a responsible index for nation reflects a mission in creating a just and equitable future and new metrics of progress for the society. Next is a seething inquiry into the caste census and dismantling of various mythologies that coil and persist within it, also one of our current body of work. Climate change is one of the most critical themes of our times, and it is what I'd like to call our existential Armageddon. This is the paper that deals with the strategic importance of embedding circular economy in our operational and economical heart. Well, they say culture eats strategy for breakfast, and we say yes. One of our ennobling inquiries is framing of national culture policy and a look at the 21st century grid, or what we like to call an influencer's toolkit, to alter the geopolitical and economic power structures. Freak events are a quotidian reality of our times and occupy most of the feeds, newsreels, and our attention. This is one of the earlier works which launched an economic inquiry into the real cost of natural disasters for the nation and the solutioning framework to arrest and counter it. Next, a study on super trends, what we call the black swan, grey rhino, and the art of predictive precision in bureaucracy. Also a subject of a collective thinking. And a subject that gave us all sleepless nights and inner turmoil. This is a thoughtful inquiry into sustainable automation. Last but not least, one of the fine tenets of our thinking and our current intellectual obsession is a deep dive into a colossal, quiet revolution at play within the remote regions and hinterland of India, adapted by millions of volunteering Indians who are akin to quiet, yet one of the largest development cadre in the world, through the tenet of seva, and building one of the most unique bottom-up development practice, and perhaps crafting one of the most unique and the largest Indian brand of humanitarian model for the world. India has had a meteoric rise on the geopolitical stage, yet the news about Bharat is rife with accusations. World Intellectual Foundation is undertaking a monumental exercise in understanding the nuances of this new brand of humanitarian model for the world based on seva. Could it be an effective strategic lever for global collective action and mobilization? We hope to launch this proprietary Indian framework as a new development doctrine for the world. And lastly, we come to the last slide to introduce you to our cadre of quiet, obsessive thinkers who use their collective firepower to deep thinking these critical challenges of the future and evolve what we call the Bharatiya imagination for the world. Thank you for your time. Thank you so much, Heeram. हमारी संस्कृति में जैसे किसी भी कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे फाउंडर मेंटोर श्री सुधांशु मित्तल जी से कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अगस्त इंद्र उदयान जी को लेकर स्टेज पे आएं और साथ ही हमारे ट्रस्टीज़ भी स्टेज पर आएं. हाँ जी, मैं हमारे पैनलिस्ट विशेष अतिथि जो आज के इस सभा का आकर्षण है, जे साई दीपक जी, आनंद रंगनाथन जी, स्वपन दासगुप्ता जी, आप सभी मंच पर आएँ, और हीरामन तिवारी सर जी, आप सभी मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलन करें. प्लीज़ कम. ओह, डॉक्टर मीनाक्षी जैन मैम, प्लीज़ कम. सुशील सिंह जी प्लीज़ आएँ. चंद्र वाधवा जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ दीप प्रज्वलन के लिए आएँ. प्रवीण.
सिन्हा जी का, उसके बाद मनोज सिन्हा जी का। हमारे एडवाइज़र श्री राहुल गौतम जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मंच पर आएं। आप सभी का इस संध्या को शुभ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सुधांशु मित्तल जी और अगस्त इंद्र उदयान जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पे ही रहें। अब मैं सुधांशु मित्तल जी से आग्रह करूंगी कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अगस्त इंद्र उदयान जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं श्री सुधांशु मित्तल जी, जो हमारे फाउंडर मेंटोर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सभा को संबोधित करें। उसके पहले मैं इनका परिचय सभा को देना चाहूँगी, जो शायद अनावश्यक है पर एक औपचारिकता भी है। तो सुधांशु मित्तल जी, ये अतिशोक्ति नहीं होगी यदि मैं कहूँ कि ये कार्यक्रम ही संभव नहीं होता अगर 4 साल पहले आपने इस फाउंडेशन की नींव नहीं रखी होती। आप कई दशकों से भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। आपने अपने करियर की शुरुआत 1981 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में की थी। आपने सार्वजनिक जीवन में अपने कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं, जिनमें प्रमुख हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट तथा गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी के चेयरमैन। आप कई शैक्षणिक और सामाजिक ट्रस्ट के साथ भी जुड़े हैं। आप लेखक भी हैं। आपने आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नाम की पुस्तक का सृजन किया है। आप बीजेपी के उत्तर पूर्व राज्य के प्रभारी रहे हैं और आप चुनाव में आपकी खास दिलचस्पी है। आपने सेफोलॉजी को एक नया आयाम दिया है, उसको बहुत ही साइंटिफिक बनाया है और आप उसके लिए जाने जाते हैं। अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आके संबोधित करें। आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत आभार। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की कल्पना एक नई सोच देने की थी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उसके सत्य के साथ स्थापित करना, उसमें जो योगदान हो सकता है उसके लिए इस फाउंडेशन का गठन हुआ था। बड़ी अजीब बात है कि हिंदुस्तान का गौरव, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसका सामर्थ्य आज से कुछ साल पहले तक उसका मूल्यांकन जो था बहुत ही कम था। एक बहुत हल्के तरीके से हमारे बारे में अंतर्राष्ट्रीय एक सोच रहती थी। लेकिन हम सब के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण बात है कि आज के दिन वो सोच शायद काफ़ी हद तक परिवर्तित हो गई है। मुझे अभी तक ध्यान है, अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर से चालू हुए थे, फिर बन गए कि भाई अ लैंड ऑफ मीनियल लेबर,
अब एक इंटेलेक्चुअल पावर हॉर्स की तरह हिंदुस्तान की जो पहचान बनी है वो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान का न केवल सत्य, जैसे मैंने कहा, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी आइडेंटिटी, उन सबको एक बड़े सक्षम तरीके से रखना, उस पहचान को स्थापित करने में अपना योगदान देना और इस गौरव को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना, इस सोच को लेके ये संगठन का स्थापना हुई थी। एक हमने पढ़ा वी द पीपल, जब हिंदुस्तान का संविधान की चर्चा होती है तो पहले शब्द आए वी द पीपल, तभी ये आया ध्यान कि हम भारतीय। इस माध्यम से हिंदुस्तान में, भारत में जो विषय महत्वपूर्ण है उनके बारे में एक सोच, उनके बारे में एक चर्चा जरूर होनी चाहिए। और ये चर्चा देश में विभिन्न माध्यमों से इस चर्चा को बढ़ाया जाना चाहिए और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। जैसा कि आपने देखा, कई विषयों पे ये फाउंडेशन कुछ साल से काम कर रहा है। इसमें खास तौर से एक सेवा वाला जो है वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सत्य में भारत की सेवा जो है वो यूनिक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मॉडल ही नहीं है जो हिंदुस्तान की सेवा का मुकाबला कर सके, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। हमारे लिए ईश्वरीय कार्य है और इस ईश्वरीय कार्य को हम लोग अपना उत्तरदायित्व समझ के करते हैं और इसकी चर्चा नहीं करते। शायद यही वजह है कि इस सेवा के बारे में लोगों को अंदाजा नहीं है। हम लोगों ने फाउंडेशन में सोचा कि भाई, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दिस सेवा? Then we discovered कि there is no पर्यायवाची ऑफ सेवा किसी और भाषा में, क्योंकि अंग्रेजियत में देखा जाए तो सेवा मतलब चैरिटी, तो चैरिटी में क्या पैसे आपने दे दिए, बट सेवा तो हमारी वॉलंटियरिंग से स्टार्ट होती है और उसके बाद जो है इसमें इंक्लूसिवनेस है। हमारी सेवा के अंदर एडवर्सोरियल इंक्लूसिवनेस है और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। ये वो हाथी है जो विश्व में हर एक जना, कोई किसी सूंड पकड़ लेता है, कोई पैर पकड़ लेता है, कोई उसके पेट पे हाथ लगा के कहता है ये सेवा है, लेकिन नहीं, हमारी सेवा यूनिक है। इसको लेके हमारे यहाँ बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, ताकि विश्व पटल पर हम लोग सेवा कितनी बड़ी है हिंदुस्तान में, भारत में, और कैसे कैसे संगठन इसमें क्या क्या सेवा कर रहे हैं, इसको शेयर करें। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा एक बौद्धिक परिचर्चा होनी बहुत जरूरी है और बहुत ऐसे विषयों पे, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा सत्य और उसके बारे में क्या लिखा गया था, क्या हमें समझाया गया था, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। और उतनी ही महत्वपूर्ण चर्चा इस बात की भी है कि कश्मीर का सत्य क्या है, कश्मीर का इतिहास क्या है, क्योंकि यही दो चीजें आज के दिन हमारे मस्तिष्क को बहुत, उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करती हैं। आज हमें दोबारा लग रहा है कि पहले जिस हीन भावना से हम लोग ग्रस्त थे, आज कहीं अपने पे एक आत्मविश्वास आ रहा है। उसका कारण यह है कि इतिहास, जो झूठा इतिहास था, उसका सत्यापन अब सामने आ रहा है। इन्हीं सब पृष्ठभूमि के साथ आप सबका फिर स्वागत करना चाहता हूँ। इस फाउंडेशन को आपकी हमेशा सानिध्य मिलता रहे, हम लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से नई सोच, नई दिशा को लेके आगे बढ़ते रहें। आपका आशीर्वाद चाहूँगा और इस फाउंडेशन की तरफ से आपसे निवेदन करूँगा कि हमारा समर्थन करते रहिए, हमारा हाथ मजबूत करते रहिए। हम लोग कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I would request Shri Agast Indra Udyan ji to bless us. Before this, I would like to give a brief introduction of Shri Indra Udyan ji. Shri Agast Indra Udyan ji was born and raised in Indonesia, but has strongly embraced Gandhian values throughout his life. He has promoted Indian principles of non-violence, truth, and humanity. He established 4 ashrams in Indonesia as centers for these ideals.
Additionally, he has been involved in significant projects such as the Dash to Diamond project and the Indonesia-India Sangam initiative. His dedication earned him the Jamnalal Bajaj International Award in 2011, and the Padma Shri Award is in 2020 for his notable socio-cultural contribution. I request Guruji to bless us with his kind words. Thank you. Om Swasti Astu. In our world, still, you are Viswaguru. We call Om Swasti Astu. For, like you, Namaskar, we start always in the morning. Om Swasti Astu. Thank you. I just read, I don't want to miss, because with the, in front of the intellectual forum this time, it is a real privilege for me to standing here and to little speech about the bridge between Indonesia, India, of course. 75 years, the diplomatic relationship between Indonesia and India now. The first country support Indonesia is India. And the first country to support you when you are independent, also Indonesia. Therefore, the long relations. In our symbol, we call Pancasila, then written Bhinneka Tunggal Ika. That is in Sanskrit. Our airlines, Garuda Indonesia. If you come to our currency, you have most from 50, 100, all Mahatma Gandhi. We have Ganesh. The symbol of the big institution also in Indonesia, like Institute of Technology Bandung. That is Garud. And Ganesha, big Ganesha. Just 5 years ago, when we start the library in Universitas Islam Indonesia, what they find when they do Bumi Puja? All the statue of Sivalinga, everything in Java. You see, you say Jairam now, but in Prambanan in Jogja, all the sculpture of Ramayana is there. And till now, Ramayana is becoming of the curriculum for the university students, even they are Muslim. Then how the relationship? Then the last yoga, Modi ji's announced 21st of June, International Yoga Day. The essence of yoga is silence. We are still preserved. What is the silence? In Indonesia, in Bali mostly, till now, we have silence day, 36 hours in silence. Airport closed this March only. Every year, mostly March. Airport closed. We cannot go outside. We are chanting the mantra, all. We still Trisandhya. 3 times. You can see in the television, in the radio, every morning 6 o'clock before Brahma Murta, there is Trisandhya, the Gayatri. Afternoon, evening, 3 times. Still we are preserved. Yes, we are not forget the root. India is the root, but the fruit in Indonesia, still the fruit in Indonesia. You see, compulsory in Indonesia, when we go to the temple, we should wear our lungi like this for the boys and the girls. But here we lost. You go with jean, we go with short pant. Then hope World Intellectual Foundation, when in the discussion still
we should preserve our heritage and promoting our cultures. And thanks, of course, to Sri Sudhanshu Mittalji, founder and mentor of the foundation, whose vision and guidance have paved remarkable, please, then meet. This is just like a sangam, like the Triveni, Ganga, Yamuna, Saraswati. You see, this is the symbol, Ganga, Yamuna, Saraswati, but here is a sangam, all intellectual. I see all the artists, the really intellectual, the women. Therefore, you see, our mantra still in the morning, we are also in Indonesia, Twameva mata, Chapita Twameva, Twameva bandhu, Sasaka Twameva, Twameva vidya, Draminam Twameva, Twameva sarvam, Mama Deva Deva, Twameva sarvam, Guru Deva Deva. Why Twameva mata first? Why not Twameva pita first? Why mata? Bharat mata ki. Then you say mata, why you not call Bharat pita ki? You say Mother Ganga. The water, mother also. Therefore here, thanks to my loving sister, Himagi Sinha, you are doing very good work to connect people, of course, together. Very good work. Therefore, India is Viswaguru. Therefore, India is Viswaguru. You come here, no wonder face like this. All like lion. Yeah. All your eyes really pure. To do something good for the society. Therefore, in 75 years of the relationship Indonesia through the World Intellectual Foundation, someday make a trip to Indonesia. Now Vistara, direct flight. I am also becoming Minister of Tourism of Indonesia to promoting. We are so many. And the last, our religion is Tirtha. Islam use water. You see, from Mecca, Zamzam. Christian use water. Buddhism use water. We are also use water. Hinduism. But in Indonesia, all as Pandit like me, why my hair like this? Actually, 2019, I'm already finished I just happy to be sannyas. But 2020, the government India give me the Padma Shri Award. Then I should use my name. My name is Sidarasi Putra Manuaba after sannyas. But I should make original name. Then when I met Modiji, he say, I am also brahmachari like you. I am doing the best for my country. You should doing the best for your country. Therefore, thank you to everyone here. This is the opening. Hope we are not talk about the India only, but India is Viswaguru. You see now in anywhere there is a temple of Hindu. There is in Muslim country, not just only Hindu I brought, but all. The Sarva Dharma is from the world of our Indian contribution to the world. Then hope this forum, World Intellectual Foundation, make a good remark and also promoting the bridge nowadays, not only India, but India how becoming inspiration to the world. Vaisudeva Kutumbakam. Thanks very much. Om Santi, 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 Om. Thank you so much, Shri Agas Indra Udyanji, to bless us with his kind words and guidance. Moving ahead, I would like to draw your attention back to the first session of the evening. आज के हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी थे, पर किन्हीं कारणवश वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं, पर उन्होंने हमारे हम भारतीय ग्लोबल डायलॉग सीरीज़ के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। तो हम आपको 2 मिनट उनका वक्तव्य सुनाते हैं।
मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा प्रथम ग्लोबल डायलॉग हम भारतीय का आयोजन किया जा रहा है। मैं सुधांशु जी को, जो इसके ट्रस्टी हैं, हृदय से बधाई देना चाहता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहता था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं नहीं आ रहा हूं। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। कल्हड़ से लेकर कालांतर तक के विषय पर जम्मू कश्मीर को लेकर के भी इस आयोजन में चर्चा होनी है। ये सच है कि लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को बदलने का अनेक प्रयास इस देश में हुआ। सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जम्मू कश्मीर की एक विरासत रही है और बहुत समृद्ध विरासत रही है। लेकिन किन्हीं काल कारणों में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अपनी वो ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सका जो उसे प्राप्त करना चाहिए था। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक ऐतिहासिक परिवर्तन 5 अगस्त 2019 को हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भेदभाव की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। सामाजिक और आर्थिक विकास के नए मानक स्थापित हुए। आज अपनी मर्जी से जीने का हक लोगों को मिला है और डिफरेंट पैरामीटर्स पर आज जब हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि देश के बाकी राज्यों के साथ आज जम्मू कश्मीर छलांग लगाने को तैयार है। वहाँ के युवाओं में नई आकांक्षा पैदा हुई है और मैं समझता हूँ कि जब विकसित भारत बनेगा तो जम्मू कश्मीर का भी योगदान किसी से कम नहीं होगा। इस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब 30-32 सालों बाद वहाँ सिनेमा फिर से शुरू हो गया है। देश भर के बॉलीवुड के लोग आकर के फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। अब हड़ताल इतिहास की बात हो गई, पत्थरबाजी इतिहास की बात हो गई और मुझे लगता है कि लेट नाइट लाइफ अब वहाँ के जीवन का एक अंग बन गई। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखेंगे तो श्रीनगर शहर, मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। 100 किलोमीटर पेडेस्ट्रियन मार्ग बनाया गया है और यूरोप की तर्ज पर, चाहे वो पोलो व्यू मार्केट हो या अनेक मार्केट बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि शांति, समृद्धि और विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर अग्रसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस डायलॉग में निश्चित रूप से देश भर से जुटे हुए विद्वान इस पर चर्चा करेंगे और आगे जम्मू कश्मीर की दिशा क्या होगी इसमें कुछ सुझाव भी देंगे। मैं फिर से एक बार इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और सुधांशु मित्तल जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और मैं क्षमा चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणों से मैं आज उपस्थित व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पा रहा। हम आभार व्यक्त करते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का। मैं माफ़ी चाहूँगी कि हमारे दूसरे सेशन की पैनलिस्ट याना मीर जी यहाँ थी, जो मुझसे शिकायत कर रही थी कि दीप प्रज्वलन में आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ याना मीर जी। आई एम रियली सॉरी। नहीं, आई एम वेरी सॉरी। Moving ahead, I would like to draw your attention back to the first session of the evening. भारतीय इतिहास को सही दृष्टि से देखना एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला है। इसी विचार पर आगे बढ़ते हुए हम अपने पहले सत्र की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है हाउ डज द हिस्टोरिकल नैरेटिव कंट्रीब्यूट टू आवर नेशनल प्राइड। So now I will call upon our esteemed panelists for the first session on stage. Our first distinguished guest on the panel is Shri Swapan Dasgupta ji. Swapan Da was the honorable member of Rajya Sabha from 21-22. He is an acclaimed political thinker. He's a renowned columnist and he written his works in media houses like Indian Express, Times of India and Statesman. He has written a seminal work, Awakening Bharat Mata. For his exemplary contribution, he was conferred with Padma Bhushan in 2015. Our distinguished
Our distinguished second panelist is Dr. Meenakshi Jain. Dr. Meenakshi Jain is a retired associate professor from Gargi College, University of Delhi. She has worked immensely in enriching Indian history and has rewritten the NCERT medieval history textbook. Her work include Ram and Ayodhya, Parallel Pathways, Sati, and the Battle of Rama, among others. She was conferred with Padma Shri in the year 2020. Our distinguished third panelist is Professor Anand Ranganathan and J, who serves as Professor of Molecular... Please, sir. Anand Ranganathan Ji serves as Professor of Molecular Medicine at Jawaharlal Nehru University. He has made notable contribution to the Indic knowledge, tradition, and historical discourse. His work, Hindus in Hindu Rashtra, stand as a significant contribution to Indian history and culture. Our fourth distinguished panelist of the session is the one and only Shri Sai Deepak. Shri Sai Deepak is an advocate of the Supreme Court of India and has been a part of many historical judgments. Additionally, he is the author of acclaimed works such as India, that is Bharat, and India, Bharat, and Pakistan. His ideas have simulated greater minds around the world. The moderator for the session is Professor Heeraman Tiwari. Professor... Professor Heeraman Tiwari serves as the Dean of the Center for Historical Studies at Jawaharlal Nehru University. Renowned for his seminal contribution to Sanskrit literature and Indian philosophical traditions, he has authored influential works such as Culture, People and Power, Epic Identity, and Humanism in Ancient India, among others. Now I would request Professor Heeraman Tiwari to take the session forward. Namaskar, pranam to everybody. And thank you, Hemangi-ji. Thank you really for this opportunity. I'm particularly grateful to the foundation and its chairman, Sudhanshu Mittal-ji, and his Dharmapatni, Dr. Mittal-ji, his entire family, and whoever is involved in this Bharatiya work that he's doing. And I'm particularly privileged to be standing here and becoming a moderator. I thought I would be speaking for a long time, but Hemangi told me, no, my job was to make others speak. But since speaking is the source of my bread and butter, I will speak for a while. And I feel a little nervous today, although at least 60 rains have come and gone in my life. And in the company, because there is the company of these intimidating intellectuals on the podium, these thought leaders, or what I would call them, Agra Janmana. Etad desha prasutasya sakashadagra janmana swam charitram shiksheran prathivyam sarva manavaha. This land, as Guruji was, to pranam to Guruji, was saying, is a land of seekers, knowledge seekers, seekers of truth, of course. So these are Agra Janmana, and they have all had a remarkable intervention in the field of ideas of India today. Meenakshi Didi has, through her many scholarly writings, as you've been told, in Indian history and culture, brought about moving changes, if you like, at least people
like me who feel that she has made such great intervention, particularly in the context of the way we have been taught and told history. Swapanda's long, illustrious, and lyrical writings have challenged the comfort of reading and representing our history. I did not know that his book will be referred to. I knew it will be referred to, and I was reading it today again after a few years. It was published 4 years ago. Of course, this is not the only contribution he has made. He, of course, is a trained historian, if you like. People know him as a journalist, as a writer, but I know him from Oxford, listening to his lectures, where he was a teacher and fellow in a field college, I believe, Swapanda. So he, for me, he begins as an academic, and then, of course, moves on to the business of writing and writing down as well. And and Anand Ranganathan, what to speak of him? He's a dear friend and a colleague at JNU, quote unquote. And my hero and my son's hero, who is 24, 25, Sai Deepak. And my son made me think more about it. Of course, whenever he speaks, you know, he sends so many sparks that fire rises everywhere, that it enters the particular ear and cavity of the mind. These people are really, I think, igniting the volcanic emotions among the young and the old alike in India. And I'm not overstating anything that I'm saying here. And here I am, a mere student. I'm reminded of my favorite Kalidasa and Tulsi Baba. By the way, Kalidas is also the favorite of many, including giants like Rabindranath Tagore, Goethe, and Romarola. So it's nothing great that he is my hero. And so much so that Tagore also wrote a poem mimicking if I were in the time of Kalidas. Jodi hotam Kalidas Shamay. That long, lovely poem, he thought that he was Kalidas, which in fact he was. And why do I remember Kalidas or Tulsi at this moment? As I said, and there is a reason for that. And then my legs are shaking, standing before these 4 or 5 great intellectuals. And they are intimidating in many ways, in age, in knowledge, in their personality, in their fame and glory. In the opening verses of the great story of Rama that Kalidas writes, it's called Raghuvamsham. And he opens up, and by that time he has written a lot. He says, Kwasurya Prabho Vamshaha Kwachalpa Vishaya Matihi Titirshu Dustaram Moha Dutupe Nasmi Sagaram. Here is the great, glorious family called Raghu. I am going to write about it, as if somebody is going to write about Bharat Mata. Swapanda has done that. Awakening Bharat Mata. He didn't write it. He wants us to remember, get up in the morning and remember. Of course, that is a political and an intellectual narrative that he has set up for all of us to follow if we can. He says, Kwasurya Prabho Vamsha. Here is the great, glorious family of Raghus. And here I am with a tiny little mind, daring to write the story. Am I not like that fool who tries to cross a volatile ocean with a tiny little boat? Udupe nasmi sagaram. And Tulsi, of course, says in the same vein. So therefore, this is my long apology for what is to come. That is, I'm supposed to ask questions. I have been given questions by Himangi. I don't know whether I'll follow those questions or the questions will emerge. But I will still say my piece, which I wanted to say, in terms of what I look at after reading them, listening to them almost night after night, Anand and Sai Deepak ji. And of course, also Swapanda and Meenakshi ji, of course, keeps invoking all kinds of things. And she said, Heeraman, if you do not come, I will not come. So I said, that's why then in that case, I have to come. Still, as a student of Indian knowledge system, it's a term which is being used a lot these days, but people like us always have been getting inspiration from it.
I always believe history to be a tale told by those generous with words and gifted in enthralling the keen listeners. That is how I look at history. A tale is not worth telling unless there is an audience for it. And when a tale excites questions like who are we, where are we coming from, how have we reached where we have reached, what do we make of what we are? Initially, such questions sound like questions in philosophy, and that also is my subject. But in philosophy, is philosophy different from history? Meenakshi would agree that it is not, but sometimes she says, Heeraman, you make everything, turn everything into philosophy. Perhaps. But try answering these questions philosophically, and I think we shall be able to get a most magical sense of history. A philosopher can be a good historian. Was Vaishampayan a historian or a philosopher? The composer of our Mahabharata and many other texts. Shankaracharya, a historian or a philosopher? Was Valmiki a historian, a poet, or a philosopher? We all struggle to figure and pigeonhole them. That's what historians have done. I'm not going to criticize anybody, but you will all know. Or was Vyasa a hagiographer, a historian, or again a philosopher? These are difficult, even controversial questions if we subject them to modern historiography, methodology, and of course, science. And since I'm not a trained historian in the strictest sense of the term, I do not expect you to take these questions in a conventional historical perspective. But I do implore you to think about them. I like literature. I am trained in philosophy and history of ideas, which is fashionably called intellectual history. The first historian of ideas that I know in the world, and the first chair of history of ideas was established in Oxford sometime in 1960s for the first historian of ideas of the world, that is Isaiah Berlin, Sir Isaiah Berlin. And after that, many universities. So I think calling oneself an intellectual historian is much more fashionable than history of ideas that India tries to suggest to us. And so, like anyone else, I love good story. So permit me briefly to tell you a tale about a tale. The story of Rama opens with this powerful evocation. And to me, history begins from here. Tapaha swadhyaya niratam tapasvi vagvidam varam naradam paripapracha Valmikir Muni Pungava. Every single syllable in this opening verse of the Valmiki Ramayana. And by the way, this verse exists even in the critical edition of the Ramayana. Why do I say even in the critical edition? Because critical edition has tried to purify what was Ramayana. There are multiple versions. Guruji said there is a Ramayana in Indonesia. I have read that. And one of my greatest, most favorite authors, and forgive Shapanda or anybody who does not like him, he is my most favorite author, that is, of course, Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul. He has written two powerful books. One is called Among the Believers, the other is Beyond Belief. And if you really want to read about what Indonesia is, read these two books. Massive chapters are there, and Kalijaga and Bandung is in great detail. He describes how the history of that local island and people is so embedded with Indian history, Indian culture, Indian literature. So that is Tapaha Swadhyaya Niratam. These are the aspects to look at what Swamiji Guruji said, looking for the truth, seeking the truth. Valmiki is supposed to have known everything, yet he needs to have a conversation with somebody, and therefore he asks one of the greatest miraculous sages of our tradition, that is Narada. Naradam Paripapracha. Why? Because he was knower of everything.
Yeah, yes, I remember that. So I'm just tempted to finish the story, as I said. Yeah? Yeah, I'm completing this. I thought I've taken only 5 or 10 minutes now. 20 minutes already? Okay. So let me come to that this is how the history begins from the Ramayana. And when you begin, and this is where I was going to come, that when Valmiki needs to ask somebody what he already knows how to write and how to compose his ideas, historical narrative, my job here is to ask questions of these people. I don't know whether I should plunge straight away into the questions or ask them one by one. So let me ask. Yeah, but that's what I'm going to ask. So can I request Swapan Da to come here and make a brief remark, and then we will ask questions. Yeah, okay. Thank you very much, Heeraman. Thank you, Sudhanshu, for inviting us to this very impressive gathering. I think everybody at some point has prefaced their remarks with the belief and assumption that India is on the cusp of a very major mindset change. We are, of course, in the midst of very other physical changes which we see around us. But most important is this mindset change. That mindset change is basically characterized by an explosion of self-confidence. Now, some of that self-confidence is a bit reckless, I do concede. But more than that, I think what everyone recognizes that we are no longer willing to be patronized by different parts of the world. That's the most important aspect which is there. And part of that has got to do with, of course, the soaring economic growth which we've witnessed. Part of it. But the larger question which we have is our intellectual development, our awareness of who we are, our self-identity, as clear as the economic path which we've chosen out to be? And here I would say, sometimes, in terms of our mindset, we are still handicapped by what we inherited in the past. And we inherited two facets. We inherited a civilization, but we also inherited the legacy of colonialism. I think Sai calls it coloniality. I'm not so, I'm a bit old-fashioned, so I just go by the old-fashioned thing of colonialism. But the imperial mindset, and here this is something which Heeraman should take note. Heeraman is one of those few scholars who blends an awareness of modern intellectual thought along with the entire legacy of Sanskrit. At one time, this was fairly common. But from the late 50s, early 60s, we sort of thought that Sanskrit is something which is meant for the pujaris. It ceased to be a sexy subject. It became something which was an optional extra, which was some drudge. And part of that drudge also became the attempt to make it into a conversational language, which it's not. The legacy which we have of a classical language was lost, and I think this affected our ability to understand our history. I think one of the big problems which we face occasionally, even when we are studying ancient India, is that many of the languages in which the scripts are written no longer have enough scholars in this country
who have an awareness of it. So, with the result, we are completely dependent on somebody else's version of it. At present, for example, I would tell you, there's a good friend of mine, a chap called William Dalrymple. He's written 2 very good books. The book on Afghanistan and a book on the last days of the revolt of 1857. He's now put his hand to ancient India. And the results are quite comic. But that comedy is being digested uncritically by a lot of people. For instance, we are being told that Ashoka was half Greek. I mean, if he was good, then he had to be half white. Nah? We are told that there is nothing to suggest that the Gupta age was anything remarkable, because he says there are no inscriptions. His ignorance is basically made into conventional wisdom. And the difference is, earlier we would have digested it. I guarantee you that today we will not digest it. That's the big change. Now, some of this may come about because in social media we have some people who are extremely combative. It may come about because on television here, 2 people on my left who actually shoot from the hip on a daily basis. And so that inhibition, that restraint, that understatement which mark people of my generation is probably not there. And I would say that that's a good thing, because I think it's time we actually asserted ourselves. Gone are the days of extreme civility. I see Vivek here in front of me, and when he made his film Kashmir Files, a lot of people say it's a bit over the top, isn't it? Look, we've had enough subtlety as far as Kashmir is concerned, and it didn't register. So it was time when someone put it with a blunt sledgehammer, because what happened there was not a tea party. I think I'll leave that for the moment. Thank you so much. Swapan, thank you. Very, very grateful. And I like the bit that you said, and I'll come back to it, I hope, if we have time, that if you're any good, you have to be at least half white. So now it is my privilege to ask Meenakshi, and please keep 5 minutes, please. It's very unfair that you ask us to speak for 5 minutes, making us wait for 2 hours. I'm sorry, I will not speak for 5 minutes. I'm really sorry. It's unfair. I mean, like 2 hours we have been waiting, and then you say 5 minutes. Okay, namaskar everyone. The topic that we are supposed to be discussing is, does historical narrative contribute to national pride? So I would like to answer that question in the following ways. First of all, it depends on who's controlling the narrative. In the colonial period, the narrative was being determined by the British historians. Can you hear me? Is it all right? Yeah. In the British period, the narrative was being dominated by British historians whose only objective was to show the Indians in very poor light as enfeebled people who had nothing going for them. That narrative continued, unfortunately, after independence, when an imported ideology became dominant in the historical narrative. So if you look at the way history was taught in the colonial period and the way it was taught for some decades after independence, there's a remarkable similarity. India was not united, it was weak, it was divided, all that happened. But what I find very surprising is that in the post-independence period, we have consciously, deliberately not given space to native voices.
There are so many evidences that we have of people speaking about the times in which they were living, and those voices do not figure in our narrative at all. And I'll just give you 4 literary sources which were there available at the time of independence, which have continued to be available, but which have not factored in any attempt at history writing post-independence. So I'll just take 5 more minutes. The first account is by a person who was a minister in Gujarat, one of the courts in Gujarat. He was an eyewitness to the invasions of Mahmud Ghaznavi. So he writes about the invasions, and then he says that Mahmud Ghaznavi, when he was on the way back, he saw another beautiful temple. He tried to dislodge the image and destroy the temple, but he failed. As a historian, I'm not concerned whether this was right or wrong, but for me, the importance of this work is that it is a first narrative of resistance of the medieval period. The second narrative is absolutely remarkable. This first narrative was written in 1024. The second narrative that I'm talking about was written in 1333. That was the time when the Sultanate was at its peak. And there is a person who was also a minister. He gave up his job and went to all parts of the country that he could, which had been devastated by the invasions. And everywhere he went, he told the people, and this is a very revolutionary idea that he made, he said, don't worry if the images are damaged. Khandit murtiyon ko bhi puja karo. Because in these times, Khandit murtis are as remarkable and as powerful as before. Today we take out Khandit murtis, we cannot think. But the most important thing that Jin Prabhasuri is known for, his book is available, it has been translated. It is available for the last 50, 70 years. Now he talks, he says that there was an image when Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan. Then a message went, keep the images hidden away. So this particular image was buried under sand and kept there for 150 years almost. At some point, that image comes to Delhi, to the treasure house of Muhammad bin Tughlaq. Now Jin Prabhasuri, he actually meets Muhammad bin Tughlaq and says that we want this image back. Muhammad bin Tughlaq asks for the image to be brought from his storehouse, looks at it and gives it to Jin Prabhasuri. And in 1334, Jin Prabhasuri is writing that I got the image, I reconsecrated it and built a small temple in Delhi, and we are so happy and proud that we are able to resume worship over there. These are absolutely remarkable instances which should feature in our history. I'm not saying whether it's true or not, but these are important narratives of resistance. I want to mention 2 more from the south. One is a lady, she was the wife of the Crown Prince of Vijayanagar. She wrote a poem called Madurai Vijay. Madurai Vijay was controlled by the Muslim Sultanate. And in this only one copy has survived by chance, and it is not complete. But in this poem, she says, Goddess Meenakshi came to my husband in a dream, and she said, look at what is happening around you. Kaveri is full of blood. In the Chidambaram temple, the mridang is being replaced by the howls of jackals. And she narrates whatever she sees, and then she gives Prince Kamban the sword of dharma. And she says, get up, do your dharma duty, and restore the order, the natural order. And it is a historical fact that Prince Kamban opens up many temples that had been closed and some that had been converted into mosques. So this is also a narrative of resistance, whether it happens or not, but these are eyewitness accounts of people who wrote at the time when these incidents happened. The last that I want to mention is that the Tirupati temple was under the control of the Sultan of Golconda for 150 years. So in that 150 years, I've been able to find only one native voice. That is a person who writes a 100 verses long poem
in Telugu, only 99 verses have survived, one has not. But those 99 verses, if you read them, they, fill you with sorrow, empathy. He's telling Tirupati, the god, that, you are so powerful and you're helpless. Thousands of people are storming into your temple every day. Why don't you do anything? So this story of Tirupati, it does not end in triumph, because we have to remember that mostly the Hindu success story, I'll just take 2 minutes more. This is very irritating, You call us, make us wait, and then say finish in 5 minutes. What is the point in calling us? It's, okay, telling me to be calm, I'm being calm. Okay, but I have to register my protest. Okay, now, so this Tirupati poem, it does not see the triumph of the order or of dharma. It ends in anguish and defeat. And last 2 points that I want to make is that when we talk about anguish and defeat, and we think that every time the Hindus succeeded, most often they did not. And I'll give you the example of the Mahamatya of the Sri Ranganath temple. That Mahamatya records what happens when the Turkish armies come. First time, they're totally unaware, they're defeated. In the second time, the processional murti is taken away by 3 priests of that temple, father, uncle, and son. And for 20 years, over 20 years, they live in the jungles. They eat from the jungle, 2 of them die. And when this young boy goes back to Ranganath, he is not allowed entry because nobody recognizes him. The young boy has become a wizened old man. And they say, we cannot allow you entry. They don't recognize the murti. He said, this is murti I ran away with. So the story of how this story unfolds, it's very, very sad and tragic. And last point, since there's a pressure of time, in the 18th century, till the 18th century, no temple in North India survived. They had all been devastated. So in the 18th century, when temple building began, because the Mughal Empire was in decline, we think that the first temple was a temple, Kardameshwar temple. So we think that is the first temple built in the 18th century. But when art historians saw that temple, they realized it is an assembled temple. It is not. That temple was built from the remains of so many temples that had been destroyed. And so if you see that temple, you'll see Khandit murtis on the walls, devastated murtis, everything. But what I'm just saying is that all this narrative, it has to be remembered by us, because only when we remember the past can we move forward. And now India has taken a very big leap forward. People are becoming aware of this suppressed, forgotten history. They are getting joyous when they see that past, and we see a new hope and available in the country. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, so I was told that's right. Okay, no problem. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Meenakshi Didi, and I'm very grateful to you for keeping the time you have. Did I? Yes, but I think the next person whom I'm going to call is master of keeping time. So I'm giving him his 30 seconds. Professor Anand Ranganathan, and you know him, all about him. Thank you very much. Good evening, Heeraman Da and Meenakshi Ji, Swapan Da, and my elder brother J. Sai. And the audience, wonderful audience, Sudhanshu Ji, and everyone from the foundation who invited me. It's a real pleasure and an honor. But at the outset, I must warn you that I am always only invited once to a place. 2 weeks ago, I was invited to a place to talk on politics and beyond, and I absolutely blasted the judiciary. I said, forget about politicians. It's the judiciary that needs to be taken to task. 50 million cases are pending, collegium system, there is so much of backbiting, there's so much of nepotism. And it's not just that the wheels of the judiciary are grinding slowly, they've come to a halt. It's an absolute abomination.
And only later I realized that the person sitting next to me who lit the lamp was the Chief Justice of the Allahabad High Court. I forgot where my car was parked and I took the Uber and ran from there. And of course, many of you would have been very disappointed to know that the Honorable Governor could not come. I was a bit relieved because last time I was there with him, I said the fellow should be suspended for 3 months. So the fact that I'm always invited only once is also kind of very comforting because I can say what I really want to say. And without fear of fervor. But we want you to say what we want you to say. And because of paucity of time and because my dear colleague Heeraman Ji has taken most of our time, so in the true traditions of JNU, I might add, I'm going to make 3 or 4 points. And at the outset, I'm very grateful that our beloved Swapan Da has already mentioned this person called William Dalrymple because I was about to castigate him, but I was very sure if Swapan Da would mind it or not. But I'm very happy that Swapan Da, who represents Bengal and England, and loves Mamata and Margaret in equal measure, had very kind words to say about this backpacker with tattered chappals who's now become a historian. It's not the fact that he's writing books. Everyone is free. It's a free country. You can write whatever trash you want. But the fact of the matter is that recently he was insinuating that only after the wrecks that he saw about the Kalinga War and the devastation that had happened, Ashoka converted or resorted to Buddhism, without telling the fact, as has been told by Indian historians, especially Sanjeev Sanyal in his monumental book, that Ashoka was already a Buddhist 4 years before he undertook the Kalinga War. This is the sort of misinformation that we've been fed, not just by people who, and Dalrymple has come up with great phrases, I have to say, but the best phrase that has ever been come up is actually to describe Dalrymple. He's been called a giant seal in a kaftan. Nothing more encapsulates Dalrymple than that. The fact of the matter is that such blatant lies have been fed to us for 70 years that I think the time has come to stop blaming the historians and start blaming the politicians. I'm absolutely fed up that we draw the line at some charlatan or some guy who's resorted to writing books on history or what has been happening with our leftist quack historians. Most of them unfortunately belong to the university where both of us come from. I think we have to draw the line because the problem is not the books. Out of every 100 books that are written, 90 are trashy. So does that mean that we should ban them? No, left does that. In fact, Dalrymple was the one at the forefront of cancelling the books that he didn't like. A very famous example happened 2 years ago. No, I think let's stop blaming historians. I firmly believe change happens from the top down. Awakening might happen from the bottom up. But what use is awakening if you are impotent? What is the point of being woken up by having your shoulders shaken? Wake up, this is happening, and you find you can't do anything. So let me give you 4 examples very quickly, keeping the time. Let me do a lot of quoting out here, lest I may be liable to defamation, but thankfully J. Sai is on the thing, so he'll save me yet again. Last time he only took kachori as a fee. I don't know, maybe idlis this time round. Quote, remembering Maulana Azad on his birth anniversary, he is widely admired for his scholarly nature and intellectual prowess. He remained at the forefront of our freedom movement, working closely with other leading lights, promoting unity and brotherhood. Unquote. This is a quote by Narendra Modi. Now let me quote Maulana Azad. Quote, be extremely hard against kafirs, but extremely kind amongst ourselves, unquote. All relationships in the world can break down. Father can turn against son, brother against brother,
Mother can shun her child, but the relationship of a Muslim with a Muslim can never be severed, unquote Maulana Azad. I think we are tired of virtue signaling and political correctness. We are tired of blaming people who resort to writing trash about history. Change has to come from top down. And if the topmost person believes this to be the true facet of our history and what is to be taught in our schools, eulogize these people, then I don't think there is any redemption for this country. Quote, met Muslim community delegation. I presented the sacred chadar, which will be placed during the urs of the beloved Khwaja Moinuddin Chishti at the esteemed Ajmer Sharif Dargah, unquote, Narendra Modi. Quote, I will raise these Ansagar Hindu temples to the ground. I have come to India to fight the holy war against infidels, unquote, Khwaja Moinuddin Chishti. The Hanafi Sufi saint who fought alongside the demonic Gauri helped capture Prithviraj and unsparingly converted Hindus. Quote, best wishes to my sisters and brothers of Goa on the day of the feast of Saint Francis Xavier. May this occasion further the spirit of harmony and brotherhood in our society, unquote, by Narendra Modi. Quote, Hindu gods and their idols are as dirty as they are ugly and horrible to look at. Witnessing the destruction of temples and idols gives me so much joy, unquote, Saint Francis Xavier, the chief architect of the Goa Inquisition that led to the conversion, torture, and murder of countless Hindus. Keeping time, I shall allow these quotes to simmer in and kind of go inside your brains and think whether what is it we want for our future generation. To be disallowed, to be able to discern what is a good book or a bad book, or to be able to discern who is a good leader and a leader that is leading us astray by eulogizing the people whose truth should come out. Thank you. Thank you. Among many thanks that I need to give you, one is for keeping time, and secondly, not at all disappointing in provoking all of us. Thank you very much, Anand. I'll come back to you. Only one question. Will I be ever called again? That is up to Sudhanshuji, but thank you very much. Now, of course, now, as I said earlier, one and only J, Sai Deepak ji. He doesn't need any introduction. He has been introduced. He has a massive fan following among the young and the old alike. Thank you very much, Sai. Vande Mataram, Jai Shri Ram. I'm coming directly from the court. It's a Sunday, I know, because we have had a long day of conferences with judges today, hence the colonial avatar. So there's a bit of exhaustion here, but Swapan Dasgupta, sir, never fails to say the right thing. He's fantastic in what he said, because I think that's most important. He touched the nub of it. So you've got facts from Dr. Jain. You've got the meta aspect from Swapanda. You've got AK-47 from Anand. Let me just connect all these, because I think that is the advantage of going at the fag end of it. What Swapanda refers to as irreverence is 100% correct, and it's irreverence that comes from being the 90s kid who saw your history being massacred in textbooks. Enough is enough effectively captures our sentiment. From there, you go and you try and arm yourself with knowledge so that you're in a position to disseminate it. Each time you try to present something about your history, the first thing that is missing is empathy, and the first thing that is present is judgment. I don't care for what others think, and this is the sentiment from the Hindu community. So Anand blames politicians, I am blaming the Hindu community. No other community, when presented with this kind of horrendous genocidal massacres that it has survived, reacts with this kind of judgment towards its own ancestors. They were defeated because they were cowards. They were defeated because they lacked Kshatriya spirit. They were defeated because they were divided. They were defeated because they were casteist.
They were defeated because they were patriarchal. You can't find nothing positive about your people? What is the point of history if it doesn't take you closer to your people? What is the point of it? If history is meant to be another weapon or a stick that you use to settle scores on social media, burn it. It has no purpose according to me then. If the point is to settle, let's say, debates on social media or in friend circles or to massage your own bloated egos, what is the point of it? How are you remotely doing justice to all the efforts that Dr. Jain has just pointed out? If people shed their blood, their lives, their women, their children, their men, everybody under the sun to protect the Murti, and hundreds of years later, today we have a debate within the Hindu community whether we should take back all the occupied sites. Why should you read history if this is your reaction after becoming aware of the kind of the trouble that we've gone through to recover one place? So what is this about? So is history your weapon to beat the Congress? Is history your weapon to beat the left? Is history a weapon to beat your friend who's a leftist or a Marxist or a communist? Is history a weapon to go closer to your ancestors? Where is the sense of empathy in trying to understand your own people? That is the curse of Indian historiography today. Our reasons for wanting to set right history are fundamentally wrong. Why do you want it in the first place? The opening video that was going on when we sat here, I'm sorry to say this, I mean no disrespect, I found it very difficult to sit through that video. To reduce the sacrifices and the troubles of your ancestors to mere cliches and stereotypes is not done. And the worst part of our history is that it is not in the past, it is a continuing present. The challenges of the past continue today. Perhaps if you were a geographically isolated, let's say, region, so to speak, you can still afford to look at your past with a sense of, let's say, archival sense, in the sense you can look at it, hua tha. So I need to understand in an academic sense, kya hua tha. Everything that has happened is repeating itself. Kal chakra phir se wahin pe aake khada ho chuka hai. The 1920s, according to me, are no different from the 2020s. The only question that I've been constantly asking myself is, at least at this juncture, will we take the right decision instead of making the mistakes of the past? And therefore, when I look at history, I'm blunt about the fact that I'm looking at weaponizing the Hindu mind. I'm absolutely blunt about it from a societal perspective. If you still don't know how to look out for your interest, you deserve everything that you have suffered and everything that will come your way if you don't learn from it. Somebody has to say this. The politician will not. Somebody else has to say this. I'm the last person as a lawyer to discount the importance of power. I'm the last person to say in the larger picture, in the big picture, in the calculus, it doesn't matter. 100% it matters. This congregation has been made possible because of the change from 2014. Let's admit that. But 2014 was made possible because there was a society yearning. Let's admit that as well. The verdict of 9th of November 2019 was made possible because of 496 years of Jaddojahed. By generations of people who did not know whether they'd be remembered or not. Lawyers will get their visibility. Judges will get their visibility. Who is going to talk of the Nihangs and everybody else who fought for 400 years? There was a time when both these communities were fighting together to protect the Kshetra. Can you say the same thing about Punjab of today? Too uncomfortable a fact? Therefore, history is important for Bharat. I don't care whether history is important for anybody else or not. It's extremely crucial for Bharat. Now let me just share a few points based on what Swapanda pointed out. When he quotes
Dalrymple's position on Ashoka being half Greek. Why is it that there is this dying need on the part of this white man to look for everything that is white, even in Bharat's history? So there's a fantastic book of Thomas Troutman. You should read it. It's a series of books that he's written on the Aryan invasion theory, its origins. You will never be able to understand the caste debate without understanding the history of Aryan invasion theory and vice versa. Remember that. When you're reading Indian history, that is the thumb rule. So when these people come to this country, they're like, we have colonized so many places. It's like the juggernaut of the Australian team finally being defeated in Calcutta. It comes here, and then it's asked, these guys are boggled. This fellow is black. He is an idol worshipper. He's a polytheist. And still he's culturally and spiritually superior to us. That question is repeated over and over again in their personal correspondence because they're hoping to find a fully inferior civilization, which is a defeated civilization. But a defeated civilization is not necessarily an inferior civilization. That is the realization that leads them to the point. If they are superior in some way, then that superiority must be traced back to us. And hence starts the reverse engineering of Indian history by bringing in the Aryan angle that everything that white stands for victory, and therefore at some point, some fellow who was white would have come here, inseminated the blood here, and from there, these guys must have become victorious. That is this dying need. So around that period, they had something called the Tree of Civilization. The Tree of Civilization is the mapping of different civilizations based on their superiority and inferiority, which they had mapped for themselves, and who you think would be at the top of that particular pecking order. It has to be the white man. How is this entire thing worked out? Language becomes the basis for understanding somebody's race. Their inability to wrap their heads around Sanskrit leads to the conclusion that Sanskrit must necessarily be a white contribution and therefore an Aryan contribution. And from there starts the analysis of the Aryan invasion theory. We continue to spew this nonsense in today's Dravidinist politics in the South. This is literally, pun intended, the Bible of the Dravidinists. Because this is what they swear by when they push their agenda of Brahmin versus non-Brahmin, therefore Aryan versus non-Aryan and Dravidian, therefore North Indian versus South Indian. I say this, I've said this before. Separatism of Kashmir at least openly wore the Kalashnikov on its sleeve. Dravidianism uses social justice as a weapon, which is much more dangerous than AK-47, not because I have a problem with the concept of social justice, but anti-Hinduism and anti-Bharatiism is packaged in the fantastic label of social justice warriorship. So my suggestion would be, try to use these platforms as moments of creating more actual, practical, weaponizable scholarship, as opposed to creating cults around anybody. If you're truly a land of seekers, then seek the truth and have the guts to present the truth regardless of who is in power. If you choose not to do that, to quote the adage of the colonizer, you're being penny wise and pound foolish. And in the long run, forget the long run. In the next 25-year cycle, which is supposed to be the touted Amrit Kal, you will see everything that transpired in 1924 leading to 1947 repeat itself. I have no interest in burnishing my secular credentials under any circumstances, regardless of who is in the audience. I'm more interested in securing the safety of my people, and my people are the Hindus, period. If you don't operate with that sense of realism, बेचते रहिए सर्वधर्म वड़ा पाव भाजी. Thank you. Sai Deepak ji, thank you very much. Thank you very much, and thank you all for your thought-provoking comments. I know we have lesser time than we would have otherwise normally and ideally liked, but we have 20-odd minutes for discussions, and 10 minutes.
So I was told at 8 o'clock, but anyway. Okay, okay. So anyway, so I let me open this question with Swapanda, a very short question, because I had a lot of questions from your book. And in one of the places, quoting Radha Kumud Mukherjee, you eulogized the fact that he and others were looking at the ancient legacy of India, because there is a running thread which I call the pain in all of your presentations, which is the legacy of the past and what do we do about it. Each of us have different solutions and interpretations, but traditionally what Swapanda, you have written there, quoting Radhakumud Mukherjee, what he thinks about the ancient past, and this is where we need to look at. And what very quickly, let me say what Sai Deepak just mentioned, that there were scholars who always thought that Sanskrit was a gift of the white scholars. There is a lot to say. I can go on speaking for hours and hours. There is evidence of that. But I would like your comment on that. And you have made certain very, very wonderful remarks in your opening remarks. I think what Sai mentioned about Dravidian ideology is very pertinent in this context. Dravidian ideology not only distorts the history of India, it actually nullifies the existence of India itself. And this is not a new trend. It's just something which has been inherited for a long time, right from the time of the British, who couldn't understand how a nation state born on the model of the Treaty of Westphalia could actually be transported into India, which is based on a completely different cultural, civilizational aspect. Radha Kumud Mukherjee was one of the very few early people, early nationalists, who tried to trace the idea of India, you know, this idea of India which we talk about so much these days, to our old Shastric knowledge. That's right. And to a very large extent to our epics. And he was, and that text, that lecture which he gave to the University of Mysore in 1924, I think, if I'm not mistaken. Yes, yes. Still remains a classic, and that I believe should be made obligatory reading to a lot of people who talk about the idea of India. Thank you, Swapanda. And just connected to this, Meenakshi Ji, you can ask him later. Let me ask you the question that, as I said, all of us are concerned about the narrative which stems from the legacy and how it has been perceived, how it has been mutilated, how it has been presented or appropriated. So this appropriation and rejection is happening constantly in history, and you have given 4 or 5 very important examples. But this narrative of resistance, which Sai Deepak just mentioned, in what way do we intensify intellectually also, particularly here we are concerned with intellectual resistance, because the reparation is too weak a term now for us to use. How do we do it today like you have been doing and these two intellectuals are doing? See, that resistance was always there right from the advent of the invaders. And it continued even till the colonial rule and thereafter. What happened was that partition took place along religious lines, but unfortunately or fortunately, many of the people who voted for partition opted to stay in India. So that was a problem that left group of historians, they tried to address that problem by negating that the past. Previous 1,000 years and saying there was Ganga Jamuni Tehzeeb and the rulers were all the time trying to accommodate. But how long can you go on fudging the past? I think now the time has come when people are refusing to accept all this that has been taught to them, and people on the ground, they are taking things into their own hands. They don't need validation from anyone. They are doing what they think has to be done. Yeah, I would agree to some extent, but what Sai Deepak just said, that it is those of us who read and interact in public spheres and read in the books and newspapers
are, of course, trying to reject in certain sense. And quite rightly, as Sai Deepak said, that no, if you want to fight this war on social media in a way that is being fought, perhaps it is futile. But there is still more. Resistance was always there, but how do we convert it into a path towards victory? I think that resistance, the idea of that resistance was never lost among the common people. And that is there, and they are pushing the narrative forward. They don't need recommendations from people like us. Thank you. And just connecting it to what I wanted to ask and provoke Anand further was that, of course, I want you to, of course, you have quoted, which are quotable quotes and powerful quotes, but I want to go back to your book, which you have recently published. And in that sense, Sai Deepak and you somehow come together to see what actually we see ourselves as Hindu in India and Hindu civilization. What is it that we need further to do to see that this kind of narrative is much more widespread and intellectually more intense than what we find it today? Thank you, Dada. I made sure that I would not be invited again. Let me make sure that there's an ED raid on me tomorrow. Because the fact of the matter is that I have 99.9% agreed with Sai always. I'm not just saying this because he's my brother. But here I disagree with him. And when he says, when I blame the politicians, the very top, and he blames the Hindu society. Us. No, you have no power. You're not a politician. No, Hindu. Plus, you're honest, so you can't be a politician. You're just a JNU professor. No, but to come back to this, when Sai says the problem is not about the politician not doing what he's supposed to do, the problem is the Hindu society. He puts the blame on the Hindu society. So I ask him point blank, no one is as aware of what needs to be done to emancipate the Hindus, to remove the discrimination than J. Sai, then Vishnu Jain, then Hari Jain, then Meenakshi Jain, then so many others. No one. But what has happened in the last 10 years? The society is awakened through these giants. Has the Places of Worship Act been abrogated? Has the Waqf Act been abrogated? Have the Kashmiri Hindus been rehabilitated? Have the Places of Worship Act been abrogated? None of those things have happened. Who is responsible for making those things happen? That is why I believe that you can awaken as much as you want. As much as you want. Ultimately, if the person who is right at the very top is not awakened, nothing is possible. Thank you very much. And that, Shobanda, yes, we have time, yes. I think this deserves a certain rebuttal. The idea that we are confronted with an insensitive political leadership which is completely unaware of the impulses of the Hindu community is, to my mind, an extremely lopsided argument. Today, the legitimacy of the claims of the Kashmiri Pandits have been recognized. Article 370 has been revoked. This didn't happen because society wanted it. This happened because political people took the initiative and did it. The Ram Mandir was built, yes. There was a lot of abeg on the part of people. There were a lot of impulses on the part of people. But the crucial step of ensuring that it was done, the manner it was done, that there was no last-minute resistance, was at the behest of the political people. So the contribution of political people may sometimes be inadequate at times, but they are certainly quite important in the transformation of the India and in the awakening of India, of Hindus as we see it. Yeah, well, just a few seconds. 10 seconds. Less than 30 seconds, yes. Less than, of course. Yeah, not your 30 seconds, no. I of course, Swapanda, I agree with him. But I would have this to say, and I forgot about the temples being under state control continuing for the last 10 years. But besides that, I think what he makes is a very important point. What I would say is that when things are morally and ethically right, patience is not a virtue. For how long will Hindus wait?
I admire the resilience of the politicians. I admire the fact that they know what needs to be done. It's just that why should we be eternally patient like Nandi outside Kashi Vishwanath waiting for 400 years? And one sentence from Shopanda, yes. Yes. 400 seats Yeah, Shopanda. and then talk about being patient. You give 400 seats and then you talk about Yeah, absolutely. Now, finally, I want to come to Sai Deepak, and I want to change the topic a little, which you haven't touched, maybe because of the paucity of time, and your contribution about Sabarimala is known to everybody. I just want you to explain how do you square that circle, which some people say, of course, I understand it, I am on your side, but some people think, why do you have to have a ban of certain kind of people in a temple which should belong to everybody? The problem is I've taken a conscious decision not to use any of my temple cases as calling cards. Because one, it seems then that I'm milking the temple cause for a personal gain. And that's something as a lawyer I'm extremely wary of. And even as a person I'm extremely wary of. All I can say without getting into the merits of the issue is that the division within the Hindu community is there with respect to this temple exposes the fundamental Christianization of the Hindu mind, wherein it fails to wrap its head around the diversity of energy spaces within Hindu dharma. That's one. But you see, the one important conversation in this entire thing that needs to be bridged and addressed, and here I'll play the peacemaker between Swapanda and Anand, is just this. The fact of the matter is, fortunately or unfortunately, there is only one political vikalp as far as Hindu interest is concerned as on date. From a larger Hindu perspective, is that good for us? According to me, no. But there is a difference between what should be and what is. The situation today is this. These are the cards on the table at this point. Now, how do you then make sure that your causes become attractive to the politician? I will proceed on the basis that you have a certain conscientious political establishment in power, but it is equally important for them to cater to incentives, because at the end of the day, politics functions on incentives. Now, therefore, there is a part, let's say, idealism, and then there is a part which is, let's say, purely political in nature. The efforts that people like me, and I don't wish to include me in this, there are others who are full-timers in this, I'm a 10% part-timer in that sense, is that we are trying to create a critical mass of opinion that translates to two things, one of two things. Pressure which results in incentive, or pressure that results in disincentive. It's not rocket science, there's nothing that is close to my chest that I have to hide. This is exactly what's been going on. The hope is that with each passing term, apart from economics, we also address civilizational legacy issues, because that's equally important for political survival, because when I speak of illegal migration, it's not an academic issue. It affects everybody who's in power, and it affects Hindu existence. When I speak of alienation of Hindu land, it affects everybody, because then it is encroachment of our spaces. There's a reason why Ujjain is surrounded by everybody else. Kashi is surrounded by everybody else. Then you go to Kalikamba temple in Chennai, it's surrounded by everybody else except Hindus. Okay? So what I'm trying to say is that there is a very clear intersection or overlap where the political interest meets the societal interest. It would help if both of them speak with each other, listen to each other, if there is a feedback loop and there is a handshake between both sides. Because as I said, I'm a realist. Power is important, but power for its own sake without delivery is equally not, it's not desirable, because then the question is, there was a purpose for which these votes have come your way, so perhaps you should push the envelope as much as possible. I think it's a setting of expectation more than a grievance. That's what. Thank you so much. And much that I would want us to go on talking to them, and perhaps some of the questions from the audience would have been much more insightful than questions coming from me. I want to thank you all. I know at least 10 ideas have come today. I have counted them all from 4 people. And these 10 ideas, of course, if you take them with you and digest them, and probably we will have an opportunity to talk to them again, maybe at Sudhanshuji's forum or somewhere else. But thank you very much for being patient and listening to us. And I want to thank you all individually. I know you all very well, at least up to 3 people. Sai Deepak, I know you from your writings and your television appearances. Thank you so much for this session.
And I'm grateful to you again, once again, Sudhanshu ji and this foundation. I'm very, very grateful. Thank you. Now I will request Sudhanshu Mittal ji for his concluding remark. Enlightening debate. I won't say controversial at all because I do not see a conflict in this. Let me start with a very core fundamental. इसमें था कि भाई इतिहास जो लिखा गया है उससे हमारी खुद की अस्मिता पे या हमारे खुद के चिंतन पे क्या फर्क पड़ता है. हाउ डज इट इफेक्ट अस. मैं सिर्फ एक बात से लेके जाता हूँ. सबसे बड़ा जो हम पे एक कलंक माना जाता है वो है हमारे वर्ण व्यवस्था. Let's take the bull by the horn. This is very deliberate. I'm supposed to wrap it up, but I just want to give you a food for thought. There was a very deliberate effort to discredit the entire Varn Vyavastha and make us very apologetic. Now, just look at how the system has been demonized. What is a Brahman? तो वो फिल्मों में आपने देखा होगा कि तुलसीदास जी का वो सिर पे पहने हुए पॉट बेलीड और नारायण 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 कहते हुए इसका चित्रण करा गया कि ये ब्राह्मण है. व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ ब्राह्मण? जिस व्यक्ति का पेट और पीठ मिली होती थी ना वो ब्राह्मण था. क्यों? साल में कितने दिन उसको समाज से भोजन मिलता था? श्राद्धों में या कभी किसी की डेथ पे, जन्मदिन पे. महीने भर तक का भी भोजन उसको नहीं मिलता था. बाकी दिन भोजन में क्या करता था? अपने कमंडल में जितना आया उससे उसका परिवार का या उसकी दोनों हाथों के आया उस भोजन से वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता था. इसलिए उसका पेट और पीठ मिली होती थी. लेकिन उसने क्या करा? उसने ज्ञान को कंठस्थ करके पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों तक उसको जिंदा रखा. और यही हमारी ज्ञान की आधार है, यही हमारे ज्ञान की भूमिका है. और ये ब्राह्मण था. हाँ, लेकिन देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, किसी भी व्यवस्था का अपवाद होता है. एक जिसको हम कहते हैं व्यवस्था और एक उसका अपवाद. अपवाद को उठा के हमने पूरी व्यवस्था को बदनाम कर दिया और अपने आप को अपॉलोजेटिक बना दिया कि हम लोग अच्छे लोग नहीं थे, हमारा समाज अच्छा नहीं था. आइए क्षत्रियों पे. क्षत्रिय समाज की मान्यता क्या थी? कि राजा आपकी रक्षा के लिए सेना का नेतृत्व करता था, खुद सबसे पहले तलवार उठा के चलता था. प्राण की आहुति कौन देता था? राजा देता था. और उस समाज का चित्रण क्या करा? एक क्रूर, एक वहशी, एक बड़ी बड़ी मूंछों का लाल आंख वाला एक वहशी जो नेतृत्व था. रेपिस्ट. That is how you portrayed a Kshatriya. Is this the truth of a Kshatriya? अगर ये उसका सत्य होता तो उसके समाज की मान्यता ये नहीं होती कि उसे रक्षा करनी है समाज की. जो आपका रक्षक था वो भक्षक कैसे हो सकता है? और अगर वो भक्षक था तो माफ कीजिए, उसके समाज की मान्यता रक्षक की नहीं हो सकती. मैं तो वैश्य समाज से आता हूं. मेरा चित्रण क्या है? कन्हैया लाल. कन्हैया लाल बही खाते का चोर. चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए. यही चित्रण है ना. यही हमें फिल्मों में दिखाया, यही लेखनी में आया. सत्य क्या है हमारा? अगर पैसे से इतना मोह था तो हमने धर्मार्थ कैसे कर दिया? स्कूल कैसे चला दिए? हमने धर्मशालाएं कैसे कर दी? हमने हर धर्मार्थ पे समाज के लिए पैसा क्यों खर्च कर दिया? अगर कंजूस मक्खी चूस थे और अगर बही खाते के चोर थे तो माफ कीजिएगा, सदियों तक और आज तक जवान पे धंधा कैसे हो गया? उसकी जवान पे विश्वास कैसे हो गया? तो या तो वो सत्य है और या ये सत्य है. दुर्भाग्य यह है कि सत्य कुछ और था और उस चित्रण कुछ और था, और इस चित्रण को चैलेंज नहीं करा गया. फिल्म देख लीजिए, लेखनी देख लीजिए. अच्छा, एक और मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज यहां से कहना चाहता हूं, एंड क्योंकि आपने कहा हिम्मत होनी चाहिए तो मैं आज हिम्मत से इस बात को रखना चाहता हूं.
तुम्हें भी लीड डूबेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, अस्पष्टता एक अभिशाप था, लेकिन वो अभिशाप क्या था? वो हाइजीन फैक्टर का एक एवोल्यूशन था। अस्पष्टता थी, ठीक है ना, क्योंकि जो आप काम कर रहे थे उसकी हाइजीन से स्पष्टता थी, ये मेरा मानना है। मैं आज एक पूछना चाहता हूं कि अगर ये वर्ण व्यवस्था का सबसे गंदा की अभिव्यक्ति थी, तो इस समाज के अंदर अस्पष्टता कैसे हो गई? हाउ वॉज देयर अनटचेबिलिटी अमंग्स्ट दी सो कॉल्ड अनटचेबल? क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था का अभिव्यक्ति नहीं थी, ये जो उस समय का जो कार्य हो रहा था उस कार्य के हाइजीन फैक्टर थे। सो व्हेन यू टॉक्ड अबाउट द अनटचेबल, उनमें भी हाइजीन के डिफरेंट लेवल्स थे। चमार का हाइजीन लेवल जो था मेहतर से अलग था, मुशहर से अलग था, और इसीलिए उनमें आपस में अनटचेबिलिटी थी। ये आज तक का सत्य है, ये बोलने के लिए कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज politically it may be incorrect, but that's the reality. And there is where I feel the intellectuals of this country have failed this country. It has failed the Hindu society. आपने मीनाक्षी जी जो आपने कहा ना, इतिहास तो कुछ और था। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप एडमिशन ही नहीं ले सकते थे, और ले लेते तो लेक्चरर तो कभी बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर सोच के साथ और एक पर्टिकुलर दर्शन और चित्रण के साथ इस सारी व्यवस्था में आपको अपने प्रति अपमानित होने का ज्ञान दिया गया है। उस ज्ञान को जो दिया गया था, जिससे हम अपमानित अपने को महसूस करते थे, अपने को इंफीरियर महसूस करते थे, दिस हैज टू बी चैलेंज्ड। साई जी, हिंदू समाज छोड़ दीजिए, आप पॉलिटिशियन, मैं भी पॉलिटिशियन हूं, आप छोड़ दीजिए मैं। सत्य यह है कि अगर आपको जिस चीजों के बारे में खुद अपमानित महसूस करते हैं, उसको ठोक के जब आज हम उसका दूसरा पहलू दिखा रहे हैं, उस पहलू को उठा के सबके सामने रखेंगे, तो जिस व्यवस्था में आप परिवर्तन चाह रहे हैं अपने आप आएगा। जब मुझे अपने इतिहास पे, अपने संस्कार पे, अपने सारे एग्जिस्टेंस पे गर्व होगा, तो मुझे किस बात की चिंता होने वाली है? देखिए, मैकॉले का जो सारा था, उसका खेल कहां से चालू हुआ था कि आपके आत्मसम्मान को जो है तोड़ना है, आपको अपने ज्ञान के बारे में संचित करना है। जिस दिन you indulge in self doubt, that's the day I've broken your backbone, and this is what has happened. आप सब लोगों ने आके विभिन्न पहलू पे इसकी बात रखी है। मैं चाहता हूं इसके बाद से इस पक्ष पे भी एक डिबेट होना चाहिए। इसका सत्य जब सामने आएगा तब हम गर्व से कहेंगे, ना केवल हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति महान थी, और हम आज गर्व से उस महानता को एक्नॉलेज करते हैं। जो कहा गया हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सत्य नहीं था, वो एक प्लॉय था। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनुग्रहित हैं, आभारित हैं, और जो आज सबको सुनने को मिला है उससे हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है, और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आगे एक बड़े प्रचंड डिबेट में बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले कि आप लोग जाएं, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपका। मैं अशोक जी, जो नरेंद्र कुमार जी के साहबजादे, नरेंद्र कुमार जी डीपीएस स्कूल के चेयरमैन थे, आइए। और सुशील कहाँ गए? अच्छा चंद्र वाधवा जी, पहले आप दोनों आए। हाँ, चंद्र वाधवा जी संपर्क प्रमुख हैं दिल्ली के संघ की दृष्टि से। आप सबका अभिनंदन, और आपके लिए एक हमारी तरफ से आभार सूचक। अशोक जी, मैं कह रहा था, नरेंद्र कुमार जी जो हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल के पहले चेयरमैन रहे हैं, और हर आनंद पब्लिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनका अनफॉर्चुनेट निधन हुआ, हम सबके लिए बहुत लॉस की बात है। अशोक उनके साहबजादे हैं। आप सबको हमारी तरफ से आभार। A big hand to all the panelists. I think it's been a wonderful debate. इधर अरे, और आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके लिए हमारा आभार।
बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारा दूसरा सत्र चालू होगा, जो कि सब लोग यहाँ पे कश्मीर के विषय पे है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी an eye opener for all of you. I can see my friend raring to go. और मैं ज़्यादा उनकी तारीफ बाद में करूँगा, पहले आप सबको मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ, लगाइए फटाफट। थैंक यू सो मच, प्लीज करो, वेरी गुड। हिमालय जी सबको इनवाइट करिए, तीन चेयर है ना, और 4 चेयर लगवाइए। विवेक जी को सबसे पहले, हाँ क्या, कौन सी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट अपनी, हाँ हाँ बुला देंगे ना, पहले बुलाइए तभी। Now we will move ahead to unveil the World Intellectual Foundation's academic report on Kashmir. This report, I will This report is product of the collective efforts of Dr. Rubina Mittal and Kunal Singh. I will request both of them to come onto the stage, and I will request all the panelists of second session to be on the stage. Shri Vivek Agnihotri ji, Yana Mir ji, Professor Ashutosh Bhatnagar ji, Shruti Yadav ji, This report provides an evolution of Kashmir region from various socio-cultural perspectives and discusses a way to the future. I invite the author of this report. Okay. Dr. Rubina Mittal is the Director of Research and Innovation at the World Intellectual Foundation. She is a Professor of Operations Research at Delhi University with over 25 publications. She serves as co-chair of the Education Committee at the Chamber of Commerce and Industry. She is also an executive member of FICCI's Education Committee. In addition to her work with WIF and Delhi University, Dr. Mittal is a core member of Gandhi Smriti and Darshan Samiti. Kunal Singh is a senior project associate at the World Intellectual Foundation. He is currently pursuing an LLB at the Campus Law Center. With a master's in Sanskrit literature from St. Stephen's College, he possesses a unique blend of legal and humanities expertise. Now I will request our guest of honor, Shri Agast Indra Udyanji, to come on the stage for this unveiling of the report. एक बार दिखा दे, हमारी रिपोर्ट है सबके साथ। चलो चलो, कैन वी हैव द वीडियो? डॉक्टर रुबीना मित्तल जी ने अभी जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव को लेकर के एक स्टडी किया है, एक रिपोर्ट बनाई है। मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। जो कुछ
बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने देखा है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रुबीना मित्तल जी और उनकी टीम, उनके सहयोगी कुणाल ने इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे उन्हें सही परिदृश्य की जानकारी जम्मू कश्मीर के बारे में हो सकेगी। मैं फिर से एक बार डॉक्टर रुबीना मित्तल जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। ये सत्र जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि इस समय अगर सबके सामने एक प्रश्न है तो वो कश्मीर को लेके है। एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा कदम इतिहास में लिया गया और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। तो आज कश्मीर को उसके परिप्रेक्ष्य में जब रखा जा रहा है तो we have the most distinguished panel here. I welcome them all. आप लोग अपनी बात रखेंगे। एक फूड फॉर थॉट मैं देना चाह रहा था। जब भी कश्मीर के बारे में बात होती है तो एक नैरेटिव है। वो नैरेटिव चालू होता है कि भाई 47 में हरि सिंह जी जो थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो था वो साइन कर दिया और वो मुसलमानों की इच्छा नहीं थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन उनका नहीं हुआ, वो उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया। फिर उसको लेके एक बार बार यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन आता है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। यहाँ पे लोग ये नहीं बताना चाहते हैं कि उससे पहले उन्होंने और कंडीशन रखी थी कि भाई पैसे पाकिस्तान की आर्मी वापस जानी चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। एनीवे, मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ, एक नैरेटिव क्यों मिस हो जाता है? वो नैरेटिव है जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। 1954 में जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, क्योंकि उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करी गई थी जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा, क्योंकि दैट इज द ओनली एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जब हमेशा बात होती है कि पीपल्स एक्सप्रेशन, पीपल्स वॉइस, दैट इज ऑलवेज मैनिफेस्टेड इन अ डेमोक्रेसी थ्रू इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो 54 का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस समय शेख अब्दुल्ला साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने थे और हर वो नेता कश्मीर का जिसका नाम आज़ादी से उनके डिसेंडेंट्स या किसी के द्वारा लिया जाता है, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य था। सारी सीटें जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ले ली थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पास करा उसका प्रियम्बल बड़ा मजेदार है। वो कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन दिस सो एंड सो डेट want to formalize our relationship with India, of which we are an integral part. ये था expression of the voice of the people of Kashmir। 54 में, ये 50 की बात नहीं, ये 54 की बात है। This constitution still exists today and this is the preamble। इतने साल के नैरेटिव, कश्मीर के नैरेटिव के बारे में मैंने हर चीज सुनी। ये जो उनका फॉर्मेशन था कि हम हिंदुस्तान के इंटीग्रल पार्ट है, ये कश्मीरियों का था, हमारा नहीं था। ये वहां की जनता ने जो नुमाइंदे चुने थे, उन्होंने ये तय करा था कि वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये किसी भी कश्मीरी चर्चा के नैरेटिव में कैसे मिस होता है? ये डेलिबरेट होता है, ओवरसाइट है। आप सबने कश्मीर का इतिहास बहुत देखा है, कश्मीर का सत्य बहुत देखा है। मैं रियली चाहूंगा कि ये भी एक प्रश्न कहीं जब कश्मीर का जिक्र आता है तो इसके बारे में भी चर्चा कहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मैं सुची जी से निवेदन करूंगा, उससे पहले आप। थैंक यू सो मच सुधांशु सर। द थीम ऑफ आवर सेकेंड सेशन इज कश्मीर कल्हन से कालांतर तक। कल्हन द्वारा लिखित राज तरंगिणी कश्मीर के सबसे पुराने इतिहास में से एक है। एक गौरवशाली अतीत के बाद कश्मीर मध्यकाल से लगातार आक्रमणों, उपनिवेशीकरण और राजनीतिक अस्थिरताओं के साथ अशांति के दौर से गुजर रहा है। कश्मीर का इतिहास वहाँ के लोगों और उनके पहचान के लिए उनके संघर्ष का इतिहास भी है, और हाल ही में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने उन्हें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध कश्मीर की आशा प्रदान की है।
मैं इस सेशन के शुरुआत करने के पहले मैं सभी पैनलिस्ट का आप लोगों से परिचय कराती हूँ। किसी कारणवश अमिताभ मट्टू सर जी जो इस सेशन के पैनलिस्ट थे वो नहीं आ पाए हैं। उन्होंने इस के लिए खेत भेजा है और हमारे कार्यक्रम के लिए अनंत शुभकामनाएं। Our distinguished panelist is Shri Ashutosh Ji, who is co-founder of Jammu Kashmir Study Center, which played an important role in providing the legal framework for the abrogation of Article 370. Shri Ashutosh Ji is a journalist and writer of work, and he wrote Swatantra Samar Ki Yashogatha. Our distinguished panelist is well-known filmmaker Shri Vivek Agnihotri Ji. His film have received many national and international awards. His film, The Kashmir File, is a significant film depicting the plight of Kashmiri Pandits and the harsh realities of the region. His other important films includes Buddha in the Traffic Jam, Tashkent File, The Vaccine War, etc. Apart from this, he has also written best-selling books like The Urban Naxals. Younger of all, our next panelist is journalist and activist Yana Mir. She has been involved with many important media houses. She has been the voice of young Kashmiris at the global level. She is instrumental in shedding light on the hard-hitting realities of youths in Kashmir. Now we will request the moderator of the session, Dr. Shuchi Yadav, to take the discussion forward with our esteemed panelists. Dr. Shuchi Yadav is the chairperson of the Center of Media Studies at Jawaharlal Nehru University. She has been teaching at different organizations for the past 20 years. I request Dr. Shuchi Yadav to take the discussion forward. सबको मेरा नमस्कार। पहले सेशन ने एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल माहौल बनाया जिसमें हिस्ट्री के बारे में और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के बारे में, ग्रैंड नैरेटिव्स, मेरा नैरेटिव्स और माइक्रो नैरेटिव्स के बारे में भी बात हुई। आई थिंक ये पैनल थोड़ा मीडिया नैरेटिव्स के बारे में है। जैसा कि इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर हिमांगी जी ने इंट्रोड्यूस कराया पैनल को। बहुत सारे लोग यहाँ प्रैक्टिस से जुड़े हैं। आशुतोष जी जिन्होंने कि पिछले कई वर्षों में, इस 10 साल में ही नहीं पर पिछले कई वर्षों में ग्राउंड पे जम्मू कश्मीर के लोगों से एक कनेक्ट बनाए रखा। और जैसा कि सुधांशु जी ने पॉइंट आउट किया कि क्यों ऐसे नैरेटिव्स एब्सेंट रहे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में बता नहीं पाए या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के सामने लाया गया। ये बहुत बहुत बड़ी एक विडंबना रही है पूरे क्या कहते हैं समाज की। जैसा कि पिछले पैनल में डिस्कशन हुआ, सिविल सोसाइटी, हिस्ट्री, फैक्ट्स, नैरेटिव्स। आई थिंक वेस्टर्न नैरेटिव्स, मेरा कहना ये ज़रूरी होगा यहाँ पर अंडरलाइन करना कि वेस्टर्न माइंडसेट में हमने अपने आप को बाइनरीज में डिवाइड कर लिया। इसलिए पिछले सेशन में जो हमको बाइनरीज दिए गए वो पिछले सेशन में हम उन्हीं के आसपास, मैं कहना चाहूँगी, घूमते रहे कि हिस्ट्री है कि नहीं है, ये हिस्टोरियन है कि नहीं है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर टॉकिंग स्टोरीज विच आर एविडेंस बैक्ड आर हिस्टोरिकल नैरेटिव्स एंड द पास्ट नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड through scientifically evidence-backed stories. हम कहानियों में जीते हैं और ऐसी ही कुछ कहानियाँ आज मेरे पैनलिस्ट के पास हैं। विवेक जी यहाँ पर हैं जिन्होंने कहानियों की एक धारा शुरू की और जैसा कि पिछले सेशन में कहा गया, डंके की चोट पे कहो, तो उन्होंने अपनी बात डंके की चोट पे कही, जिसमें स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक नहीं किया पर आपको मजबूर किया सोचने पे और आज भी सोचने पे कि ऐसी चीज़ें, ऐसी एब्सेंसेस हिस्टोरिकल नैरेटिव में क्यों रही जिसने कश्मीर को एक तरीके से, एक नज़रिए से फ्रेम किया। कॉन्फ्लिक्ट को बेचा गया, कॉन्फ्लिक्ट का बिजनेस बनाया गया। और लेकिन ये कहना चाहूँगी मैं कि पिछले कुछ वर्षों में और स्पेशली लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने उस नैरेटिव को एंड किया जो फॉल्सिफाइड थे, जो झूठ थे और झूठ पे आधारित थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया सुधांशु जी
कि कश्मीरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, थे, हैं और रहेंगे, और ये 1947 में ही इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनली। जो काम अधूरा था उसको पिछले वर्ष पूरा कर दिया गया। आनंद जी यहाँ बैठे हैं, जेएनयू का एक कनेक्ट है तो मैं रेफरेंस तो करूँगी ही क्योंकि मेरे कुलीग हैं, लेकिन ऐसे लोग, ऐसी लड़कियाँ जो समाज से आती थीं कश्मीर से, उनकी केस स्टडीज़ डिस्क्रिमिनेशन की 370 को लेते हुए किसी ने बात नहीं की। आई थिंक आनंद जी एक ऐसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, और यहाँ मैं कहूँगी हिस्टोरियन भी हुए, क्योंकि उन्होंने उसको पास से जोड़ा कि राधिका गिल जैसे लोग जो सफाई कर्मचारियों के कम्युनिटी से आते थे, उनको वहाँ पर जीने की, काम करने की, पढ़ने तक की आज़ादी नहीं थी। ऐसे नाम सामने आए। आज मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी बैठी ऑडियंसेस में राधिका गिल जैसे बच्चों को कोई जानता होगा जो कि अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। औरतें जिनको ये अधिकार नहीं थे कि वो अगर वहाँ 370 है और 35A जो कि इतना डिस्क्रिमिनेटरी है, वहाँ वो औरतें सांस नहीं ले सकती थीं, प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थीं, शादियाँ करने में उनको परेशानी थी। आशुतोष जी यहाँ पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कश्मीर का एक ऐतिहासिक, एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो कि हम सबको शायद फिर से मैं कहूँगी एब्सेंट रहा है, उसको मेन स्ट्रीम में जो पिछले 10 वर्षों में आया है, कलन की राजतरंगिणी हो, नीलमत पुराण हो, या कोई भी ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेज जिनको के हिस्टोरियंस ने साइडलाइन कर दिया। आई वुड नॉट गो इनटू दैट बिकॉज लास्ट सेशन वाज ऑल अबाउट इट, you all can read about it. But yes, Ashutosh ji is here who can let us know that, what has the civilizational connect between Kashmir and the day of today has been, and it has been with the glorious past of India, where brand India has been building and should be building on that civilizational connect. Ashutosh ji, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहीं से आप अच्छा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान विवेक अग्निहोत्री जी, जिनसे हम सब परिचित हैं और उनसे ज़्यादा उनके काम से परिचित हैं, और जम्मू कश्मीर के बारे में देश को बताने में उनकी जो भूमिका है उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। या नामीर नई उभरती हुई पत्रकार भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जगह जगह अपनी बात कह रही हैं और एक बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए पहचानी जाती हैं। मैं दोनों का प्रणाम करता हूं। डॉक्टर सुश्री यादव जो संचालन कर रही हैं उनको भी अभिनंदन, और सबसे बड़ा अभिनंदन सुधांशु जी को जिन्होंने ये आयोजन किया है, और एक बार फिर प्रासंगिक बातों को, सही बातों को सही परिप्रेक्ष्य में और दिल्ली के एक ऐसे वर्ग के बीच में रखने का उन्होंने अवसर दिया है जो वास्तव में राय बनाने में काम करते हैं। ये जो आज का प्रश्न है, कल्हड़ से कलांतर, ये इतना लंबा टाइम फ्रेम है जिसमें आसानी से समेटना मुश्किल काम है, क्योंकि कल्हड़ ने भी जो लिखा है वो अपने से 3000 साल पहले का लिखा है, 4000 साल पहले का लिखा है, तो कुल मिलाकर लगभग 5000 साल की कहानी ये है। इसलिए इस सबको तब से लेकर आज तक इस सबको इकट्ठा करना ये कम समय का नहीं है, लेकिन तो भी संकेत रूप में कुछ बातें हो सकती हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी इतिहास की पहली प्रामाणिक किताब मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है कि हम जो आज रिसर्च मैथोलॉजी जिसको कहते हैं उसमें से बहुत सारे हिस्से को उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने किन किन किताबों को पढ़ने के बाद ये लिखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखे, उसके लिए क्या रेफरेंस यूज किए, ये उन्होंने आज से 1000 साल पहले किया। और इसलिए कल्हड़ का लिखा हुआ ये इतिहास है, और उस इतिहास में उन्हें जो पहले मिला वो उन्होंने लिया, अपने समय की कहानी कही, लेकिन उसमें कुछ बातें आज के लिए प्रासंगिक है, उतना करना आज भर काफ़ी है। उन्होंने जो भी लिखा उसमें से कई ऐसे बिंदु निकलते हैं जो आज चर्चा में हैं। जैसे आज हम देखते हैं भारत लोकतंत्र की जननी, ये बड़ी चर्चा में है, लेकिन कल्हड़ की राजतरंगिणी में ऐसे अनेक अवसर हैं जहाँ वो बताते हैं कि राजा, प्रजा, राजा के अधिकार, राजा के कर्तव्य, और प्रजा भी अपने अधिकार कैसे एक्सरसाइज करती है। राजा काम नहीं कर पाया और प्रजा ने राजा को बदल दिया, ऐसे अवसर कश्मीर में हैं। इतिहास में महिलाओं की जो चर्चा होती रहती है
महिला रानियाँ, महारानियाँ, ये कश्मीर के इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे पहले मिलती हैं। ललितादित्य की चर्चा हुई। ललितादित्य सबसे बड़ा विजेता कश्मीर का था, जो दक्षिण में केरल तक गया और पूर्व में खासी हिल्स तक गया, जीतता हुआ गया। और उस समय के राजाओं की, सुधांशु जी कह रहे थे छत्री की क्या पहचान, उस पहचान से अलग जब उसने कन्नौज जीता तो उसके राजा को उसके सामने प्रस्तुत किया गया और उसने पूछा कि बताओ मुझे क्या अर्थदंड देना है। हारने वाला तो दंड देता ही है, और उसने कहा कि दंड के रूप में तुम्हारे राज्य का सबसे बड़ा विद्वान मैं कश्मीर लेकर जाऊंगा। आचार्य अभिनव गुप्त के पूर्वज आचार्य अत्रगुप्त को वो लेकर कश्मीर गया, वितस्ता नदी के तट पर उनका आश्रम बनाया और उनको वहाँ रहकर अपने ज्ञान का एक प्रसार करने का अवसर दिया। वही ललितादित्य जब 12 वर्ष तक युद्ध करने के बाद दूसरे दौर में गया मध्य एशिया की ओर और नहीं लौटा, तो एक प्रतिनिधिमंडल उससे मिलने गया। उसने कहा कि मैं तो जिस अभियान पर निकला हूँ वहाँ से लौटना नहीं है मुझे, लेकिन अगर राजा की आवश्यकता है तो उसने अपने पुत्रों का परिचय बताया कि ये लड़के के मेरे गुण दोष ये हैं, इस लड़के के गुण दोष ये हैं, तो राजा बनने के लिए उपयुक्त तो ये है, इसलिए इसको राजा बनाना, इसमें बड़े को बनाना कोई आवश्यक नहीं है। और साथ में उसने संदेश भेजा कि अगर मेरा ये पुत्र भी राजा के कर्तव्य पालन करने में असफल रहे तो प्रजा उसको हटा दे और जो उपयुक्त प्रजा में से जो उपयुक्त व्यक्ति मिले उसको राजा बना ले। तो जो लोकतंत्र के अधिकार जिनकी बात हम आज करते हैं वो वहाँ से हमें मिलते हैं। ज्ञान की परंपरा, आचार्य अभिनव गुप्त की मैंने बात की। आचार्य अभिनव गुप्त कश्मीर में रहते थे और उन्होंने संकल्प किया कि उस घाटी से बाहर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आचार्य अभिनव गुप्त तंत्रालोक लिखते हैं और उसमें एक भवन खंड लिखते हैं पूरा, और उस भवन खंड में पूरे भारत के उनकी उस समय की परिचित धरती का पूरा भूगोल बताते हैं। जो कश्मीर घाटी से बाहर कभी नहीं आया वो उड़ीसा के समुद्र में कौन कौन से द्वीप हैं, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, उनके गुण क्या हैं, ये बताता है। ज्ञान की परंपरा का ये प्रवाह कैसे होता था दक्षिण से उत्तर और पूरे भारत में, इसको देखने की दूसरा पक्ष है जो कल्याण की राजतरंगिणी से हमें मिलता है। बदलता जाता है। समय बदलता जाता है। ललितादित्य के बाद 11वीं शताब्दी आती है, कल्याण का अपना काल है, उसका पूरा विश्लेषण करता है। राजतरंगिणी कल्याण की अंतिम नहीं, कल्याण के बाद भी और 2 राजतरंगिणी लिखी गई, 1 राजदर्शनी लिखी गई, और उसके बाद उनमें पूरा 15वीं-16वीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास उसमें आता है। जिस समय को हम मानते हैं कि वहाँ पर एक अलग प्रकार का आस्था चल रही थी, उस समय भी इतिहास ग्रंथ लिखे जा रहे थे, साहित्य लिखा जा रहा था। उस समय भी संस्कृत में कई हजार ग्रंथ लिखे गए हैं, जब हमें लगता है कि उस समय केवल इस्लाम था वहाँ पर। भारतीय मूल्य वहाँ जीवित थे और वो अपना काम कर रहे थे, और ये प्रवाह निरंतर चला। ज्ञान, कश्मीर का परिचय ज्ञान से जुड़ा है, उसकी साधना से जुड़ा है, और वो निरंतर प्रवाहमान रहा है, आज तक हमारे पास है। इसलिए सबसे पहली पांडुलिपियाँ गिलगित में हमें मिलती हैं। वहाँ पर बुद्ध का विचार साथ चलता है, शैव दर्शन चलता है, शाक्त दर्शन चलता है, निम्बार्क चलता है, और बाद में जो दर्शन आते जाते हैं उन सबको भी स्थान मिलता है। इसलिए साथ रहकर जीने की, सबको अवसर देने का जो विचार है, ये कश्मीर से हमें मिला है। और कश्मीर से इसलिए मिला है कि भारत की जिस परंपरा को, जिस भारत के मूल्यों को, जिसको हम शाश्वत मूल्य कहते हैं, वो उसी धरती पर, उसी सप्त सिंधु के क्षेत्र में, उसी सिंधु की सहायक नदियों के तट पर वो सभ्यता उत्पन्न हुई। उसमें से ही हम सब के पूर्वज आए हैं, और इसलिए एक निरंतर प्रवाह है जो कश्मीर ने भारत को दिया है। इसलिए भारत ने कश्मीर को क्या दिया, आज इसकी बहुत चर्चा होती है। कश्मीर ने भारत को क्या दिया, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। पिछले 75 वर्षों की बात है। इन 75 वर्षों में बहुत सारी बातें ऐसी आई जिनको आज समझने की ज़रूरत है। एक नैरेटिव चला, उसकी बहुत चर्चा हुई है इसलिए, और मुझे लगता है विवेक जी ने तो उस नैरेटिव को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है, वो उस पर बात भी करेंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि इन जो बातें, जो नैरेटिव चल रहे हैं, इसमें उत्तर ढूंढने से ज़्यादा जरूरी है कि हम उचित प्रश्न ढूंढ लें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हमने सही अर्थों में नहीं लिया। महाराजा हरि सिंह भारत में नहीं जुड़ना चाहते थे या अलग रहना चाहते थे, ऐसा उसका कोई आधार मिलता नहीं है, लेकिन ये चर्चा चली। कश्मीर के बाद 25 स्टेट्स का और एक्सेशन हुआ, कोई बात नहीं करता कि उनको लेट क्यों हुआ, कश्मीर का देर से हुआ। इस पर सारी बहस केंद्रित हो गई। मर्जर नहीं हुआ, एक्सेशन हो गया, लेकिन मर्जर नहीं हुआ। वो एक्सेशन की बात हो गई, पक्का हो गया, उसका डॉक्यूमेंट मिल गया, तो एक्सेशन तो हो गया, मर्जर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। चीफ जस्टिस ने पूछा सरकार के अधिकारी से, भाई मर्जर क्यों नहीं हुआ? उनके पास भी उत्तर नहीं था, लेकिन बाद में खोजा गया तो 254 स्टेट्स ऐसे थे जिनका मर्जर नहीं हुआ, और वो भारत है जिनका नाम भी नहीं मालूम। मर्जर होना कोई आवश्यक शर्त नहीं थी। जिनका एक्सेशन हुआ उनका मर्जर नहीं हुआ, जिनका मर्जर हुआ उनका एक्सेशन नहीं हुआ। छोटे छोटे स्टेट्स से वो आपस में मर्ज होकर एक बड़ा एंटिटी बने, इसलिए उनका मर्जर होना था। छोटे स्टेट्स का, कश्मीर का होना नहीं था। कश्मीर अपने आप में इतना बड़ा था कि वहाँ से 4 संविधान सभा के लिए 4 सदस्य लाए गए, इसलिए ये सही प्रश्न वहाँ नहीं उठे। संविधान के साथ मखौल होता रहा। 35A की चर्चा, 370 की चर्चा। 370 इनऑपरेटिव हुआ। मैं इनऑपरेटिव शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, एब्रोगेशन नहीं कर रहा हूँ। भारत के संविधान में 370 किस लिए जोड़ा गया? संविधान सभा में उसका उत्तर है, उसमें बताया गया कि भारत का संविधान में 370 इसलिए आया कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करेगा, उसका रोकेगा नहीं। उसने 5 अगस्त 2019 को भारत का संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, यानी 370 का उद्देश्य पूरा हो गया। उसके बाद उसके कुछ करने के लिए बचा नहीं है। और इसलिए जिन प्रश्नों की हमें पहचान करनी थी उनके उत्तर ढूंढने से, उनके बजाय हम ऐसे नैरेटिव्स पर चलते चले गए जो शायद तथ्यों पर आधारित नहीं थे, और इसी के कारण हमें एक ऐसे भ्रम में जिए जिनका निवारण 2019 में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, और एक एक करके आज भी होता जा रहा है। आगे की चर्चा के लिए मैं संचालक जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो झूठ की बात हुई और शुरू हुई, उस पर मैं विवेक जी को लाना चाहूँगी। विवेक जी, आपने जो एक इकोसिस्टम था झूठ का, जिसमें पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन सब इन्वॉल्व थे, और सारे स्टीरियोटाइप्स को आपने ठोक बजाया स्क्रीन पर। आई वुड से इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट व्हाट वेंट इनटू दैट मेकिंग, आई थिंक इट विल बी नाइस इफ यू कैन शेयर everything with all of us. It's an opportunity for us to listen to Vivek ji on breaking the stereotypes. कश्मीरी हिंदुओं के बारे में आपने जो बात कही अपनी, वो आप सबके सामने रखें। थैंक यू शुचि जी, थैंक यू सुधांशु जी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम, हेमांगी, पीपल हु इनवाइटेड मी हियर। मैं एक बहुत कठिन फिल्म पे काम कर रहा हूँ, 24 घंटे वही कर रहा हूँ, पर सुधांशु जी का आदेश हो और ना हो तो बड़ा ये मेरे लिए गलत हो जाएगा। मेरी सुधांशु जी से सिर्फ एक ही शिकायत है कि आप जब टीवी पे बोला करते थे एज एन एक्सपर्ट तो लगता था कुछ बातचीत हो रही है, अब आपने छोड़ दिया है तो सिर्फ गुंडागर्दी रह गई है। और मैं बहुत घूमता हूँ, मैं जितना घूमता हूँ इतना सिर्फ आरएसएस के प्रचारक भी नहीं घूमते होंगे शायद। मैं गली गली, गांव गांव, शहर शहर, आप अगर मेरा देखें सोशल मीडिया, मैं 24 घंटे घूमता रहता हूँ। मैं 4-4 घंटे सो के भाग रहा हूँ। और उसके पीछे मैं आपको क्लियर कर दूँ, और मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ, उसका रीज़न ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक वक्त में कहा था, एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे मेरे को पता नहीं, पर मैं पैराफ्रेज कर देता हूँ। उन्होंने कहा था, गिव मी 100 कमिटेड वॉलंटियर्स एंड आई विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ हिंदू नेशन। बड़े दुर्भाग्य की बात है, उन्हें जीते जी वो 100 वॉलंटियर्स नहीं मिले। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जन्म का कुछ ऐसा बचा हुआ कर्म है। मैं अपने आप को उस काम का एक वॉलंटियर मानता हूँ, इसलिए मैं जो कर रहा हूँ कर रहा हूँ। मैं शुरू करूँ उसके पहले, जब लोग बोर होने लगे मुझे बता दीजिएगा, टाइम से चलना है तो टाइम से भी बता दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक चीज़ समझ में आई,
मैं कश्मीर में अभी शुरू करता हूँ, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। मैं आपको एक पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मुझसे अधिकतर लोग ये बोलते हैं पागल हो गए हो कि यार क्या कर रहे हो। और ये बात सही है कि इसके पहले जब मैं चॉकलेट, गोल, हेड स्टोरी जैसी फिल्में बनाता था तो आई वॉज अर्निंग लाइक वल्गर मनी। मैंने अपनी ज़िंदगी में गरीबी क्या होते नहीं देखी थी, अब देख रहा हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा इस बात पे, क्योंकि आप नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि आपको यकीन लायक बात नहीं है। लेकिन ऐशो आराम, ग्लैमर, एक ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना, वो ज़िंदगी जो 140 करोड़ भारत के और मेरे ख्याल से 7.5 अरब सारी दुनिया के लोग उठाना चाहते हैं। किसी तरह फिल्मों में चले जाएं, फट से फेमस हो जाएंगे, पैसा हो जाएगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी होगी। वो सब छोड़ के मैं ये क्यों कर रहा हूँ? Why I am imprisoned in my own house after making Kashmir files? क्यों मैं ये फतवे 3-3, 4-4 मेरे नाम पे इशू करते हैं? और क्यों मैं इसके बाद अगली फिल्म जो बनाने वाला हूँ, अभी तो 3 फतवे इशू हुए हैं, उसका 3000 होने वाले हैं। क्यों? मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। मैं आपको रीज़न ये समझाता हूँ कि हम लोगों ने, मैं क्यों सुधांशु जी के एक्सपर्ट टीवी कमेंट्स की बात क्यों कर रहा था, उसके पीछे एक रीज़न है। हम लोगों ने हमेशा अपने काम को, अपने समाज और अपने राष्ट्र के काम को आउटसोर्स करके रखा है। हमने अपनी पूरी पॉलिटिक्स, अपना धर्म, अपनी हर चीज आउटसोर्स की है। और आज जो सबसे बड़ा हम पाप और गुनाह, आप मेरे वर्ड्स में इसलिए बोल रहा हूं डिस्पाइट बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट, कई लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन एक दिन आपको मेरे शब्द याद आएंगे कि एक मर्द का बच्चा था जिसमें हिम्मत थी पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट बोलने का। जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा और आज की जब बात होगी और आगे चल के, वक्त बदलता है पहिया, मैं आपको बता रहा हूं अगली जनरेशन सिर्फ एक बात कहेगी, इस दौर का सबसे बड़ा विलन अगर कोई है तो वो है मीडिया। और वो मीडिया जिससे आप प्यार करते हैं, वो मीडिया जिससे आप प्यार करते हैं। रीजन बीइंग, हम लोगों के इतने सैक्रिफाइस, जम्मू कश्मीर विचार मंच वाले लोगों का जितना सैक्रिफाइस आप सोच नहीं सकते। कश्मीर की जब बात होती है तो पहले लेफ्टिस्ट मीडिया और अब राइट विंग का मीडिया सबसे बड़ा पाप जो वो कर रहे हैं, कश्मीर को एक ज्योग्राफिक रीजन की तरह से स्टैब्लिश कर देते हैं। आज भारत में मैं इतनी जगह घूमता हूं, आप रिसर्च कर लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिएगा, दे ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ कश्मीर एंड इंडिया। ये हिंदू लोग भी यही करते हैं, भारतीय लोग ये करते हैं। कश्मीर एक फिनोमिना है, इसलिए कि आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए, अब बंद कर दिया डर के मारे कुछ दिनों से, कि 500 कश्मीर की बात कौन करता था, कि हम भारत में 500 मिनी कश्मीर बना देंगे। आपने सुना होगा ये बात पक्की, राइट? इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको समझाता हूं। कश्मीर एक प्रोसेस चल रही है, एक समझिए एक वनडे मैच चलता है, उसमें बीच में किसी ने एक सेंचुरी बना दी, उसके पहले भी सेंचुरीज बनी, उसके बाद भी बनी, तो ये वनडे का एक चैप्टर है। मैं अभी अगली फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है द दिल्ली फाइल्स। अगर आप भारत के बाकी भूल जाइए, जहां से भारत की पॉलिटिक्स शुरू होती है और आज जहां खड़ी है, उसमें एक ही डिस्कशन चला है 100 साल में, वो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। भारत की सारी पॉलिटिक्स वहीं आके रुकती है। आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए, आप डेवलपमेंट से शुरू करिए, वहीं आके खत्म होगी। हर चीज वहीं आके रुक जाती है। क्या कारण है? आज से 100 साल पहले गांधी जी, तिलक जी की डेथ होने के बाद काफी वो साउथ का भ्रमण किया उन्होंने। देन ही आइडेंटिफाइड अ प्लेस जहां पे मुस्लिम डेमोग्राफी काफी ज्यादा थी, लगभग 48% थी। इस एरिया का नाम था मलाबार। मलाबार, जिसको केरला में आप लोग मोपला के नाम से जानते होंगे, मलाबार। मलाबार स्पाइस कैपिटल थी वर्ल्ड की। इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट पीसफुल प्लेस, एग्जैक्टली लाइक कश्मीर। और इसलिए वहां से गल्फ से, अरब से स्पाइस रूट के बहाने वहां से लोग आए। और जब ये व्यापार चल रहा था तो इस्लाम में एक निकाह एक टाइप का होता है विच इज़ फॉर प्लेजर, विच यू कैन डू। बहुत कम जो रकम होती है उस पर आप कमिट करके उस मुटाना, राइट। तो वो जो उसके तहत वहाँ की लड़कियों से शादी करने लगे। बड़ी छोटी सी बात है, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो मौसम खराब होता था रुक जाते थे, शादी करते थे, और बच्चे होते थे, मौसम ठीक होता था तो वो क्या देते हैं निकाह तोड़ने पे, महर। तो महर की छोटी मोटी रकम दे के चले जाते थे।
और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता था कि चलो इस बहाने बच्चा भी हुआ और पैसे भी मिल गए, और इस तरह से वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होनी चालू हुई। उसके बाद टीपू सुल्तान ने जब वहाँ पे हमला किया तो ज़ैमोरिन जो वहाँ के थे, शायद जमींदार, उन्होंने ऑर्डर किया कि हर मछुआरे के घर में एक बच्चा एज अ मुस्लिम रेज होगा, एंड दे इशूड सर्टेन कमांडमेंट्स कि हिंदू लोग जो है अपना घर लॉक नहीं कर सकते, ये लोग घोड़े की सवारी नहीं कर सकते, ये लोग कोई वेपन नहीं रख सकते। आप याना जी हैं, कश्मीर से हैं आप, वो भी शायद जानती होंगी, शायद नहीं जानती होंगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं जानती होंगी। कश्मीर में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। जब फर्स्ट एक्सोडस हुआ था तो 10 कमांडमेंट्स बने थे, 10 कमांडमेंट की लिस्ट है, उसमें एग्जैक्टली यही था कि आप वेपन्स नहीं रख सकते, आप घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, आप अपने घर में ताला नहीं रख सकते, ताला नहीं लगा सकते, राइट? और वहाँ धीरे धीरे जब एक मछुआरे के घर में एक मुस्लिम बच्चे को रेस करने की बात ऑर्डर पास हुआ तो धीरे धीरे वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई, और करते करते 48% वहाँ की डेमोग्राफी हो गई। गांधी जी तिलक जी की डेथ के बाद काफ़ी दौरा करते रहे केरला का शौकत अली साहब के साथ, और अल्टीमेटली 16 अगस्त 1920 को कैलीकट के बीच से, कैलीकट आप शब्द जानते होंगे, बड़ा खूबसूरत बीच है, तो कैलीकट के बीच पे 20,000 लोगों ने सुनने आए, और वहाँ पहली बार गांधी जी ने ऑफिशियली पब्लिक रैली में खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। जो लोग खिलाफत मूवमेंट, कितने लोग जानते हैं, पढ़े जो पुराने लोग नहीं, यंग में, आप जानते हैं? हाँ, क्योंकि मैं अभी कई जगह पूछता हूँ, लोग समझते हैं खिलाफत का मतलब है किसी को अपोज करना, जो गलत है। खिलाफत वर्ड आता है कैलिफेट से। उस वक्त, हाँ, तो उस वक्त जो है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इंग्लैंड ने जो है टर्की के खलीफा के ऊपर अटैक किया था, तो एक खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ था। लेकिन मज़े की बात है, कोई भी मुस्लिम कंट्री जो थी उस खिलाफत मूवमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं थी, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ हिंदुस्तान में जो लोग थे वो खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे। ब्रिटिश लोग, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँ क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप कश्मीर कभी ज़िंदगी में समझ नहीं पाएंगे, और कश्मीर आप हमेशा ये टीवी के जो एंकर्स होते हैं उन्हीं जो बताएंगे आप वो समझ जाएंगे, ठीक है? तो खिलाफत मूवमेंट का मतलब ये था कि हम टर्की के खलीफा जो है सिर्फ उसी के एलिजियंस को मानते हैं, मतलब हम सिर्फ उसी के रूल को और सिर्फ उसी के डिक्टेट को मांगते हैं, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, हम कहाँ रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। उनके हिसाब से जो टर्की था वो पीसफुल लैंड था, और भारत जो था वो लैंड ऑफ वॉर था। अब अंग्रेज लोग ये कह रहे थे कि भाई हम आपको आज़ादी की बात ही कैसे शुरू करें, स्वराज की। उस वक्त स्वराज का मूवमेंट गांधी जी ने चालू किया था। स्वराज की हम आपसे बात ही कैसे करें, क्योंकि आपकी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 10 करोड़ मुस्लिम्स की, वो तो तैयार ही नहीं है, उन्हें फ्रीडम चाहिए ही नहीं भारत से, उन्हें कोई लेना, आप इनको जोड़िए तो होगा। गांधी जी को वहाँ एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म दिखी। कभी ये मत समझिएगा गांधी जी खराब आदमी थे, पर गांधी जी के कुछ डिसीजंस थे जो शायद उस वक्त सही रहे हों लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में गलत निकले। तो गांधी जी ने वहाँ शौकत अली के साथ मिलके पहली बार खिलाफत को अप्रूवल दिया। उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा गहरा अध्ययन इस सब्जेक्ट का किसी ने नहीं किया है, और मैं पूरी अथॉरिटी के साथ ये कहता हूँ कि खिलाफत के साथ खड़ा होना हर हिंदू का, उन्होंने हिंदू वर्ड यूज़ किया, भारतीय नहीं, हर हिंदू का नैतिक, मौलिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। जब गांधी जी अनाउंस करके वहां से निकले, कई लोगों ने पेपर की रिपोर्ट से मेरे पास, जिसमें उन्होंने लिखा व्हाई गांधी वांट्स टू मेक मलाबार एज अ लैब फॉर कम्युनल दिस थिंग। आप जानते हैं उसके तुरंत बाद नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके अंदर इस लेवल की गाली गलौज और मारा पीटी हो गई कि मोहम्मद अली कुर्सियां उठा के जिन्ना को मारने आए। यू नो व्हाई? बिकॉज गांधी जी के इस मूवमेंट का सिर्फ एक आदमी था जिसने खुल के ऑपोजिशन किया, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। एंड जिन्ना सेड एग्जैक्टली गांधीज वे इज द रॉन्ग वे, माई वे इज द राइट वे, because my way is the constitutional way. And he said कि Gandhi has introduced religion into politics, and this would mean only a toxic India, and there is no
Congress has become communal and there is no place for secular people like me. I therefore resign from the Congress and I am leaving this suffocating environment which Gandhi has created, and I am leaving India forever. And he left India that day, 1921 में. शायद ये कोई जानता नहीं है, क्योंकि जिसको आप हीरो समझते हैं और जिसको आप विलन समझते हैं, वो आप इसलिए समझते हैं कि आपको क्या बताया गया है. एग्जैक्टली जो नारे लगे थे, वो नारा था, अब जो मुस्लिम्स थे वहां के मलाबार के, उनने कहा कि गांधी जो हैं वो मुस्लिम स्वराज की बात कर रहे हैं और इसके बाद मुस्लिम स्वराज मिलेगा. एंड गांधी ने अप्रूवल दिया है मुस्लिम स्वराज को. दैट्स द मैसेज दे अंडरस्टूड. और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारी पूरी 100% पॉपुलेशन हो. और एक मैं वो सारे वेल्स में भी होके आया हूँ, सारे वीडियोज़ मैं डालूंगा धीरे धीरे. आप कम से कम 50-60 वेल्स, कोई एक वेल नहीं था जो लोग बताते हैं बिना पढ़े लिखे इधर का कट एंड पेस्ट करते हैं. आजकल प्रॉब्लम ये भी है, हिस्ट्री भी जो चाहता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी लिख भी देता है. ऐसे 100 वेल्स थे, क्योंकि वहाँ पे जो ब्राह्मण हुआ करते थे, नायर्स एंड मेनन, सबके घरों में वेल्स होते थे. बहुत बड़े बड़े घर थे वो. रातों रात जिन लोगों को मारना था उनके घर के बाद कुल्हाड़ी, आप जानते हैं ना, उससे ऐसे मार्क्स बनाए गए थे, निशान. वो सारे निशान में देख के आया हूं. और उसके बाद जो मेहम चालू हुआ वहां पे, लगातार हिंदुओं को मारा गया, उनको काट काट के वेल्स में डाला गया. क्या क्या हुआ है मैं सब बता दूंगा, तो आपको फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा जो मैं अगली बना रहा हूं. उसके बाद मैं गया, स्वपन दा ने मुझे बुलाया था कलकत्ता. अब तो खैर बहुत बार जाता हूं, पर तब जब गया था तब ममता दीदी ने मेरा एक प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया था. मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कश्मीर पे. तो जब मैं कलकत्ता में गया, वहाँ 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स यंग भरा हुआ था. नेशनल म्यूजियम आपने देखा होगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, बहुत बड़ा उसका प्रांगण है. तो मैंने वहाँ पूछा, आप सब डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में तो जानते ही होंगे, कितने लोग जानते. तो मैंने देखा कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा था. मैं, कितने लोग जानते हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, कलकत्ता में सिर्फ 50-60 हाथ उठे 1,500-2 हज़ार यंग बच्चों में से. अब डायरेक्ट एक्शन क्या था? डायरेक्ट एक्शन डे ये था कि 1931-32 में जिन्ना वापस आ गए, आई डोंट नो फॉर व्हाट मोटिव, बट व्हेन ही केम बैक ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू सपोर्ट टू नेशन थ्योरी. हाँ, but he came back. Yeah, right. So जब बातचीत हो नहीं रही थी, जब गांधी जी came to meet जिन्ना, और जब गांधी जी जिन्ना से मिले और उन्होंने बोला कि भाई इधर, गांधी का ये था कि इधर मुस्लिम लीग शुड रूल, सम लीडर फ्रॉम देयर, और कांग्रेस. इट शुड नॉट बी अ मिक्स. ही रियलाइज दैट इट वोंट वर्क. यू नो व्हाट इज इन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्ना ने क्या यूज किया? जिन्ना ने अंबेडकर की बुक थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एंड अंबेडकर सेड दैट in India exists 2 Indias, one is Bharat and one is Pakistan, and it is impossible for them to live with each other. Therefore, there should be 2 nations. और जिन्ना ने वही अस्त्र का इस्तेमाल करके बोला, when Ambedkar is saying it, when everybody in your party is saying, then how is it possible not to have? And we'll have it. And he announced something called Direct Action Day. क्योंकि वो बद्र की लड़ाई जो हुई थी, मदीना की जो सारी लड़ाई थी, मदीना टू मक्का की, वो तभी हुई थी. एंड ही सेड दिस इज एन ऑस्पिशियस डे. पूरी स्ट्रेटजी एग्जैक्टली वही थी जो मलाबार में थी. गिव सच अ ब्लो दैट दे कैन नेवर रिकवर. ये था, इतना प्रहार करो खून से सींच दो जमीन को कि पलट के कोई देख ना पाए. डायरेक्ट एक्शन डे में एग्जैक्टली यही हुआ. द पीपल हु वर सपोज टू बी किल्ड, दे वर मार्क्ड, देयर हाउसेज वर मार्क्ड. पेपर में उसी तरह से एड्स निकले. वही डेमोग्राफी का सारा खेल हुआ. वही कमांडमेंट सारे के सारे निकले. जो सोहरावर्दी था उसने एग्जैक्टली वही कमांडमेंट्स किए कि पुलिस ये नहीं करेगी, घोड़ों पे हिंदुओं को चढ़ने नहीं देना, उनको उस दिन टांगा वो सॉरी क्या होता है वो हाथ रिक्शा, उसमें नहीं चढ़, सवारी नहीं देना, एंड सामान नहीं बेचना हिंदुओं को, सारी दुकानें बंद हो गई. एग्जैक्टली वही 10 कमांडमेंट्स. हजारों लोग कटे. उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं, सॉरी ओके, तो जो बस ख़त्म ही कर रहा हूँ, यहीं पे एंड है. तो जो उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं उस पर तो 30-40 साल किसी ने यकीन ही नहीं किया. जब उनको बताया गया कि किसी ये ब्रिटिश मार्गरेट नाम की औरत ने खींचे हैं, तो सबने यकीन कर लिया. आप अभी गूगल करके डायरेक्ट एक्शन डे की फोटोग्राफ्स देखिएगा, नीचे सिर्फ हिंदुओं की सड़कें बिल्कुल लबालब भरी हैं लाशों से, और ऊपर इतने बड़े बड़े 100-200 वल्चर्स बैठे हुए हैं. अभी आप गूगल करके देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. कश्मीर में तो वो हुआ भी नहीं जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुआ था.
लेकिन तब भी नेहरू ने यही कहा था, कुछ नहीं होगा। ही सेड कि जितना ये बोलते रहते हैं कुछ होगा नहीं। मलाबार में एग्जैक्टली यही हुआ था। जब हाजी ने ये सारा शुरू किया था तो जो हिंदू लीडर्स है, गांधी जी से बोला कि भाई मलाबार में आप तो बोल के आए स्वराज, वो समझ रहे हैं मुस्लिम स्वराज। गांधी सेड कोट एंड कोट, कांग्रेस अधिवेशन में नागपुर में तो मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि गांधी ने बोला अब तो काफिरों को मारना ही है, तो गांधी सेड नो हियर बाय काफिर ही मेंट ब्रिटिशर्स, कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली कश्मीर में वही हुआ, वही कमांडमेंट्स बने, वही घरों को मार्क किया गया, वही एड्स निकले, और जब ये बताया गया व्हेन इट वाज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, तो राजीव गांधी उस वक्त फारूक अब्दुल्ला के साथ प्लेन में जा रहे थे। एक बड़े सुधांशु जी के दोस्त भी हैं, पर बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे, वो खुद प्लेन में थे, उनने किस्सा बताया है। उनने बहुत साल सरकार में भी रहे वो। उनसे जब ये बात उठाई उनके सामने, तो राजीव गांधी सेड नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कश्मीर जो है ये एक माइंड सेट है। ये 500 कश्मीरों की बात हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बंबई के जुहू बीच पे आ जाइए एक दिन, किसी दिन मैं आपको टिकट भेजता हूँ अगर आपको यकीन नहीं है तो। मैं 20 साल से वहाँ रहता हूँ, मेरे देखते देखते वो सफ़ेद बीच कब काला हो गया मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरे असिस्टेंट्स और मेरे बच्चे बोलते थे तो मैं हंसता था, कहता था झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब रहते हैं, सच को रहना है, एज एन इंडियन वो रहे। लेकिन आज जो जुहू बीच है वो, वहाँ पे आपको एक हिंदू व्यक्ति नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको सिर्फ खचाखच भरा हुआ आपको ऐसा लगेगा। अभी अभी 10,000 रिफ्यूजीज आए हैं। मैं जहाँ रहता था उस घर के चारों तरफ वर्सोवा में, जहाँ मोस्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री रहती है, उसके चारों तरफ भी यही हो रहा है। इसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है, इसलिए उनके स्ट्रेटेजिस्ट लोग जिम्मेदार हैं। अगली बार कोई कश्मीर की बात करे तो ये मत सोचिएगा कि कश्मीर जो है कहीं ऊपर नॉर्थ में हो रहा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो बेंगलोर में रहते हैं। 500 मिनी कश्मीर बन चुके हैं, ये कब फटेंगे बस उसका इंतज़ार करिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। कौन कब फटेगा, और ऐसी दिल दहलाने वाली जो कहानियाँ आपने सबके सामने लाई, आई थिंक इसी से मैंने शुरुआत की थी कि कश्मीर इज़ अ स्टोरी ऑफ एब्सेंसेस, और उसका एक कॉन्टेक्स्ट पूरे भारत के साथ जुड़ता है, ये हम सबको समझना होगा। ऐसा नहीं कि वो अलग है। इंक्लूजन की ये पहल है, मैं कहना चाहूँगी, जो कि यहाँ पर कश्मीर फाइल्स केवल के बारे में बात नहीं हुई, पर एक मानसिकता के बारे में बात हुई, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने शुरू की है। अब इतिहास की बात हुई, उसके बाद की बात हुई, कालांतर में अब अगर नई पीढ़ी को देखें तो पिछले सेशन में भी सोशल मीडिया को थोड़ा सा फ्रेम किया गया, लेकिन मैं कहूँगी कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया के ज़माने में 21st सेंचुरी में कश्मीर का यूथ 370 के बाद आज क्या सोचता है। हम तो सब बाहर के हैं और कहानियाँ सुना रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन वहाँ के अंदर का रहने वाला क्या सोचता है, क्या करता है और भारत को कैसे देखता है, इसी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी याना मीर को, जो कि कश्मीर की यूथ आइकन के रूप में उभर के आई हैं। एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक प्रख्यात यूट्यूबर हैं। याना मीर, आपका स्वागत है। Thank you so much for having me here, World Intellectual Forum. I'm feeling very humbled and very honored at the same time. I feel honored and humbled to be around such scholars and gurus who have spoken before me. आप सबको सुन के बहुत कुछ सीखा, समझा, थोड़ी बातें मानी, थोड़ी बातों से कंफ्यूज हुई। सुधांशु जी, बेशक I am proud of my civilization, my history, like you said, we should all be proud of our civilization and history. इसीलिए तो जब जिहादी मुझे मुखबिर, मुनाफिक, भक्त ये सब लेबल करते हैं, somehow मुझे तौहीन महसूस नहीं होती. In fact, I feel proud. It's like, you know, saying, yeah, dude, you're right, I am a proud bhakt. So, देश से गद्दारी करना, अगर इससे मैं मुनाफिक बनती हूँ तो ठीक है, dude, I'm a proud munafik, whatever. So, you're right, we should be proud of a civilization.
आनंद रंगनाथन जी बिजी चल रहे थे, शायद निकल गए हैं, लेकिन ये मेरे इंस्पिरेशन है. आई वांट टू टेल यू गाइस दैट इनफैक्ट मैं इनको कॉपी करने की भी कोशिश करती हूँ कभी कभी ऑन न्यूज़ चैनल्स. तो लेकिन इनकी बातों से मेरा जनरेशन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बिकॉज इन्होंने कहा कि 90% बुक्स ट्रैश होती हैं. तो फिर अगर हम रिसर्च करना चाहें, करेक्ट हिस्ट्री कहाँ से जानेंगे अगर 90% बुक्स ही ट्रैश होती हैं? तो ये एक सवाल था मेरे मन में. विवेक जी ने भारत में डेमोग्राफिक चेंज की बात की. सर, इंग्लैंड टर्की को साइड में छोड़ दो. डेमोग्राफिक चेंज की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़े थे, जब वो घर में हिंदू बहू को लाते हैं तो बहू को कन्वर्ट क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ी वजह है. बहू को कन्वर्ट क्यों करते हैं? जो उसका रिलीजन है, जो उसका कल्चर है, उससे उसको छुड़ा क्यों देते हैं? जिस रिलीजन और कल्चर के लिए उसकी पीढ़ियों ने सदियों तक कुर्बानियाँ दी, उस बहू से क्यों कहते हैं कि वो कल्चर अपना छोड़ दे? ये सबसे बड़ी रीज़न है डेमोग्राफिक चेंज की. साई दीपक जी ने कहा कि हिंदू अपनी मंदिर क्यों वापस नहीं मांगते. मगर मेरा सवाल ये है कि खुद को भारतीय कहने वाले मुसलमान, मुगलों को डिफेंड करने वाले मुसलमान क्यों नहीं सोचते कि जब मुस्लिम सिर्फ 15% है इस देश में एंड हिंदूज क्लोज टू 80%, तो फिर मस्जिद भी उतनी 6 लाख और मंदिर भी उतने 6 लाख. ये क्यों नहीं सोचते? ये कैसे हो गया? एक संघ वाले जनाब, इनसे मुलाकात हुई थी मेरी पिछले दिनों. उन्होंने कहा कि आपस में हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि भारत में रहने वाला हर शख्स ही हिंदू है, चाहे इबादत राम की करे या अल्लाह की. तो इस पे मैंने तबसरा किया. जब भारत के मुस्लिम्स कहते हैं कि हम भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, हम भी उतने ही भारतीय हैं, तो इनसे कितनों ने सवाल पूछा कि इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से लेनी थी तब लड़े थे, अगर आज़ादी अफगानिस्तान या कतर से लेनी होती तब लड़ते क्या? कितनों ने पूछा? Anyway, coming to my subject, which is Kashmir. Kashmir is a land whose history, it's been like a recurring cycle. Kashmir has always struggled to keep its history intact. Foreigners always tried to erase Kashmir's history, whether Zainul Abidin erasing the names of 35 Kashmiri kings during his lifetime in the 13th century, or modern-day Pakistanis trying to build a fake narrative that Kashmiris are a lost Jewish tribe and have nothing to do with Kashmiri Pandits in their bloodline. So fake narrative, Raj Tarangini में भी mentioned है, fake narrative आज भी चल रहा है. Kashmir has always been fighting to keep foreign attackers away, whether it was the great king Jaloka, who fought to keep the Greco-Bactrians out, or the modern-day Indian army fighting to keep Pakistani invaders out. So ये राज तरंगिनी भी mentioned है और आज भी हो रहा है. Kashmir always welcomed all beliefs and faiths and offered its land to devotees. Whether Shaivite Damodar, building the Damodar Sudha, or Lalitaditya, building the Sun Temple, or Zainuddin, building the Charare Sharif. Kashmir always witnessed destruction of its religious sites. Whether the destruction of Buddhist monasteries by King Nar in 1023 BC, or the Hindu temples by Pakistani invaders in modern times. Now, interesting to note, अगर किसी ने आपसे कहा कि राज तरंगिनी फेक है, वो सब झूठ है, वो सब था ही नहीं, तो उनसे एक चीज़ कह देना कि ये वाला किंग नार जो है, 1023 BC वाला किंग नार, BC वाला किंग नार, the way he died, क्योंकि रेबेल्स ने इसके पैलेस को जला दिया था. तो इस वजह से आज तक कश्मीरी वर्ड फॉर फायर इज नार. तो अगर राज तरंगिनी फेक होता तो कश्मीरी वर्ड फॉर फायर वुड नॉट बी नार. एनीवे, Kashmir always witnessed some phases where it was overrun by foreign invaders. यानी कि बोलने के लिए कोई और किंग लेकिन रूल कर रहा है फॉरेनर. जैसे कि किंग वासुकला in 795 BC, as he stayed silent when Hunas indirectly ruled, or more recently when the Abdullah stayed silent when Pakistan-backed Hurriyat was indirectly ruling Kashmir. So Kashmir witnessed many cruel leaders who were instrumental in massacre,
whether Mihira Kula in 735 BC or Sikandar Butshi Khan in 13th century, or Sayyid Ali Shah Gilani in 1989. Many Kashmiri warriors were killed by honey trapping, whether King Waka in 665 BC or rifleman Aurangzeb in 2018. Just like Gopaditya, who in 400 BC drove out his own religious heads and brought Brahmins from outside to rule because he believed they were more authentic Hindus. Kashmiris, even till modern times, thought Muslims from outside, like Andrabis from Afghanistan or Gilanis from Central Asia or Shahs of Iran, are better Muslims than their own Sufi Islam. So, जो राज तरंगिनी में तब था, वो आज भी हो रहा है. Many honest and virtuous rulers of Kashmir willingly gave up power, like Sandhimati in 22 BC or CM Ghulam Nabi Azad in 2008. जो राज तरंगिनी में था, वो आज भी हो रहा है. We know the word multitaskers well. Kashmir has given birth to multi-fighters, not multitaskers, but multi-fighters. So they fought simultaneously against different forces to protect Kashmir, whether Lalitaditya in 7th century fighting physical wars against Kambodjas in north, Tibetans in east, or Dardas in south to protect Kashmir as integral part of his kingdom. Even today we have people like Yana Mir in media war fighting attacks from Pakistan in north, China in east, Western media and Turkey in west to protect Kashmir as part of Indian sovereignty. So it'll be very interesting to hear everyone present here as they unravel their experiences and the changes they witnessed in Kashmir after 2019, because 2019 is the year when many changes took place. So जो ललित आदित्य के ज़माने का जो glorious era था, वो फिर से वापस आ गया 2019 में, an era of peace, prosperity, progress, moving ahead. And all I can hope for as a Kashmiri is that this continues, the reforms which have taken place continue, the progress continues. Thank you so much. Thank you so much, Yana. एक youth की आवाज़ कैसी होती है और कैसे past को present के साथ जोड़ सकता है, एक नई तरीके से एक media person ही कर सकता है. अब मैं सब नहीं, मैं अपने लिए भी माफ़ी चाहूँगी. ये पूरा पैनल काफ़ी यंग है, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ. I would say that हम सबको भूख लगी है क्योंकि हम लोग यंग हैं, लेकिन I would want to open the house for some questions, क्योंकि पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन का दौर है जिसमें यूट्यूब और मीडिया के लोग सारे जुड़े हैं. और जब विवेक जी, याना और आशुतोष जी यहाँ बैठे हैं, तो जर्नलिस्टों से और मीडिया फिल्म मेकर्स से और मीडिया पर्सन से कुछ सवाल तो बनते हैं. अगर किसी का कोई सवाल है तो पीछे से एक शायद हाथ उठा है, वहाँ पीछे. ये माइक पकड़ा देंगे आप प्लीज. कोई आगे से दो तीन क्विक सवाल पूछ रहे तो नहीं. इधर Just a very quick question to the panelists. What is it that is going to happen in Kashmir to prevent the Pakistan army the way it's playing it out? I mean, that seems to be the fundamental question. How will you tackle the impact of the Pakistani army doing all that it is doing in Kashmir? I think Ashutosh ji can. We are not. You address the question to who you want to answer. Yeah. पहले आप में जवाब नहीं कभी आएगा. पाकिस्तानी आर्मी का सवाल किस रेफरेंस में कह रहे हैं वो जरा बताइए. Because आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं and you're analyzing the problem from the issue of peace in Pakistan, in Kashmir. But that peace will never come till somehow what the Pakistani army is trying to do is neutralized. वो कैसे होगा? ठीक है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और आर्मी एक तरीके से सिनोनिमस है. और जनरल मुशर्रफ से एक सवाल पूछा था किसी पत्रकार ने, जब ये सब हमारा 99 में लाहौर यात्रा और ये सब चल रहा था, तो मुशर्रफ से पूछा गया कि अगर ये कश्मीर की समस्या, कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी. मुशर्रफ ने कहा था नहीं. सीधे उन्होंने मुशर्रफ ने कहा कश्मीर देने के बाद भी समस्या हल नहीं होने वाली. कश्मीर का अस्तित्व, पाकिस्तान का अस्तित्व भारत के विरोध कर रहा है.
और कश्मीर पर हमला मुझे लगता है इसलिए नहीं वो कश्मीर है, वो उस पर हमला इसलिए होता है वो भारत है। कश्मीर से जो लोग निकले वो इसलिए उन्हें निकलना पड़ा कि वो अपने आप को भारतीय कहते थे। इसलिए वहाँ की पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी, दोनों के साथ शांति की कोशिशें की जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान का अस्तित्व जब तक है तब तक हमें तैयार रहना होगा। ये ज़रूर है कि जब हम शक्तिशाली होते हैं तो कम हरकतें करता है, जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारें होती हैं, जब हमारे यहाँ ऐसे संदेश जाते हैं। 99 इसलिए नहीं हुआ कि उसको मूड आया, 99 इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ की मीडिया में उस समय खबरें चल रही थी कि सेना के पास हथियार नहीं है, उनके पास तो बंदूक है तो गोलियाँ नहीं हैं, सेना का मनोबल गिरा हुआ है। जब ऐसी खबरें यहाँ की मीडिया में चल रही थी, जिसको उन्होंने उठाकर ये किया और उनकी बात की, अपने यहाँ की भी जो स्वर्णिम रिपोर्ट थी उसमें भी ये है और उनके यहाँ भी जो रिपोर्ट थी उसमें भी है कि भारत कमज़ोर स्थिति में है, गठबंधन की सरकार है, सेना का मनोबल गिरा हुआ है, इसलिए करगिल को जीता जा सकता है या कश्मीर पर हमला करके उसको लिया जा सकता है। तो हम जब कमज़ोर हैं तो पाकिस्तानी नहीं, हर किसी की इच्छा होगी कि हमें जीत ले। इसलिए हमारे पास विकल्प अपने आप को मजबूत बनाए रखना है और ये किसी भी डेमोक्रेसी को या किसी भी राष्ट्र की जिंदा रहने की एक शर्त है। मैं एक लाइन में आपको जवाब दे देता हूँ आपके सवाल का। आई हैव नो एनालिसिस। कई बार हम गलती करते हैं, स्ट्रेटेजिक साइलेंस को पीस मान लेते हैं। करेक्ट। कश्मीर में पीस तभी आएगी जब वहाँ पे कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे सारे के सारे, और जब वहाँ पे वापस हिंदू फिलॉसफी और हिंदू कल्चर इस्टेब्लिश होगा। उसके बिना वहाँ पीस कभी आ नहीं सकती, डिस्पाइट बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट। आई एम टेलिंग यू दिस। जेएनयू के प्रोफेसर्स की एक आदत है कि कहीं भी छुपे रहते हैं, तो अभी मुझे छुपे हुए आनंद जी पीछे से हाथ उठा रहे हैं। आनंद जी, देयर इज अ फैन मूवमेंट आल्सो हियर, याना मेंशन, प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, सवाल पूछने का हक सिर्फ स्टूडेंट्स को होना चाहिए, ऐसे प्रोफेसर पर अगर प्रोफेसर स्टूडेंट की जितना यंग लगे तो फिर then you need a young professor to answer that. Thank you for the compliment. थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ओल्ड और सीनियर एजेड फिल्म डायरेक्टर से नहीं है, यंग याना वीर जी से है। नहीं, सॉरी विवेक। नो याना जी, आई ऑल्सो रियली ग्रेटली एडमायर यू, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा कि आप मुझे एडमायर करती है, मैं ये सिर्फ सोच सकता हूँ कि शायद इसलिए क्योंकि मैं ब्रूटली जो ट्रूथ मुझे लगती है मैं वो बोलता हूँ जी। तो मैं वही अभी बोलना चाहूँगा, आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा। आपने कहा कि ये कैसे मुस्लिम्स हैं, अगर जो इंडियन कहते हैं अपने आप को, जो लड़े इंडिपेंडेंस के लिए, वो जब हिंदू ब्राइड आती है तो उसको कन्वर्ट करते हैं। ये उनकी गलती नहीं है। प्रॉब्लम इज इन चैप्टर 2 वर्स 221, ये कुरान में लिखा है, यू आर नॉट अलाउड to marry a polytheist or a Hindu woman unless or until she converts. In fact, it says that a Muslim slave is better than a Hindu or a polytheist woman. पर कुरान को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। थैंक यू। नहीं आनंद जी, ये आपकी दलील सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुरान इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं लिखी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, अगर आप कुरान पढ़ेंगे, डोंट रीड इट इन ट्रांसलिटरेशन। So what we do, what most people are doing wrong is, and it's a fault of the Indian government, ये तबलीगी जमात कुरान को अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है, ये देवबंद अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कोई और अलग तरीके से। जहाँ तक मुझे पता है कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि टू यू योर रिलीजन, टू मी माइन, यू कैन प्रे टू व्हाटएवर यू वांट। इट डजंट से एनीवेयर कन्वर्ट हर फर्स्ट एंड देन ब्रिंग हर होम, इट डजंट से दैट, बट देयर इज अ वे। The only thing that's written is if she does not believe you, if she is asking you to convert, then she's not the right person for you. That's all that there is in the Quran. But इसको अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। और यहाँ भी मैं टिप्पणी करना चाहूँगी, जब सऊदी में तबलीगी, देवबंदी, बरेलवी ये सब नहीं है, तो इंडिया में क्या कर रहे हैं ये सब? इनको क्यों नहीं अब तक बंद किया गया? That's all. Thank you. अच्छा, बहुत सीरियस मामला हो गया। मैं आपको एक हंसी मजाक में एक बात बोल देता हूँ। जब कोई बच्चा स्कूल में पकड़ा जाता है गाली देते हुए, तो टीचर से क्या बोलता है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लिटरली मत लीजिएगा। और मतलब क्या होता है, लोग समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है। लोग मतलब समझ गए हैं। एक और सवाल है, हाथ उठ रहा है, आप खड़े हो जाइए प्लीज। मेरा नाम सचिन पाठक है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ, लॉ का। आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल सर आपसे और एनामीर दोनों ही लोगों से है। अपने वर्ड्स जरूर दीजिएगा कि
आई हैव नॉट विजिटेड द कश्मीर एट, तो आप बहुत विजिट करते हैं, जैसा आपने बोला कि आप बहुत घूमते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा मैम कि क्या चीज़ है जो अभी तक कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया? व्हाट इन ग्राउंड रियलिटी ऐसा क्या है कि अभी तक वो कश्मीरी पंडित वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, और वहाँ की कंडीशंस क्या है? There are two reasons for that. First reason is वो डरे हुए हैं अभी तक, क्योंकि जब भी वो आना चाहते हैं, जैसे पिछली बार आए थे पीएम पैकेज के द्वारा उनको जॉब्स भी मिली थी, वो आए थे बेचारे, लेकिन फिर एक राहुल भट्ट की किलिंग आपने सुनी होगी, और फिर बैंक मैनेजर की किलिंग हुई, तो इस वजह से वो फिर से डर गए और फिर से उनका एक्सोडस 2.0 या आई थिंक 7.0 हो गया, क्योंकि 7 बार उनका एक्सोडस हो चुका है बेचारों का ऑलरेडी कश्मीर वैली से। सो येस, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पूर्ण कृष्ण भट्ट जी की हत्या हुई। अच्छा, वहाँ पे आसपास रहने वाले कुछ लोग, कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं, कह रहे हैं शोपियन में जहाँ उनकी हत्या हुई, हर जगह यहाँ पर मतलब आर्मी बैरक्स, आर्मी कैंटोनमेंट, आर्मी का कौन घुस आता है, कौन करता है? हमारा शोपियन तो पीसफुल होने चला था, कोई किलिंग नहीं हुई थी पिछले 1.5-2 साल में। पूर्ण कृष्ण भट्ट को कौन अंदर आके मार दिया? उनके ही बगीचे में आके किसी ने उनको शूट कर दिया। एंड बिलीव यू मी, इट इज़ नॉट ओनली द कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ऑल्सो गेट किल्ड, लाइक बाबर कादरी। वो तो लॉयर था, उसको मिलने कुछ लोग आए, आके शूट करके चले गए। तो बिकॉज ही यूज्ड टू टॉक अबाउट पीस, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट, ही नेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट आज़ादी ऑफ कश्मीर, ही यूज्ड टू हैव अ प्रॉब्लम विद बीजेपी एंड ऑल, बट आज़ादी नहीं बोलता था, तो उसको भी मरवा दिया। शुजात बुखारी को क्यों मरवा दिया? तो जाहिर बात है कश्मीरी पंडित्स आर गोइंग टू फील स्केर्ड कि जब ये लोग मुसलमान को नहीं बख्शते, जो हमारी सोसाइटी में छुपे हुए टेररिस्ट हैं, तो हमें क्या बख्शेंगे? तो ये फियर फैक्टर अभी भी है, लेकिन पहले जितनी जो किलिंग्स होती थी वैसे नहीं हो रही है आजकल। बट आई डोंट नो इफ दैट इज़ इनफ टू गिव देम द कॉन्फिडेंस टू कम बैक, बट आई थिंक दे शुड, क्योंकि जद्दोजहद सारे कश्मीरियों की है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू। जब कश्मीरी नहीं छोड़ के भाग रहे, देश का साथ भी दे रहे हैं, मरते भी जा रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ के भाग रहे, तो फिर आपको भी वापस आना चाहिए। लेकिन इसका एक और रीज़न है कि इतने साल हो गए, आप सोच सकते हो 1989 में निकले हुए, अब वो थोड़ी ना अभी तक रेफ्यूजीज रहेंगे। जाहिर बात है, दे हैव प्रॉस्पर्ड, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर्स इन अदर प्लेसेस, इंडिया से बाहर भी निकल गए बहुत सारे। अब वो सब जो उन्होंने बनाया है इतनी सालों की पूंजी, वो सब छोड़ के तो नहीं आएंगे। तो एक तो ये भी चीज़ है। अच्छा याना, इसी से जुड़ा हुआ वो पत्थरबाज कहाँ चले गए जिनके लिए हमें स्टोरी करने को दिन रात कहा जाता है? जी, आजकल आपने शायद उद्यम पोर्टल नहीं देखा, कितने एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, उसमें से 2.5 लाख जो पत्थरबाजी करते थे उससे भी 3 गुना ज़्यादा जो है आजकल सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। जिस 2,51,000 लास्ट ईयर, उसमें से 51,000 आर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, एंड दैट हैज़ अनप्रेसिडेंटेड इन कश्मीर। ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है। विवेक जी, आपसे पूछना चाहूँगी, हमेशा जब ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं और कही जाती हैं, स्पेशली बड़े पर्दे पर, तो सबसे पहले डाउन होने लग जाता है। आपको कैसा फील होता है? फिल्म को बैन करिए, डाउन करिए, हॉल को बंद करिए। जेएनयू वाले थोड़े, हम भी भारतीय हैं, हम भी जेएनयू हैं, लेकिन और भी लोग हैं, तो आपको कैसी फीलिंग आती है जब एक वेल रिसर्च स्क्रिप्ट इस तरीके से प्रोपेगेंडा के रूप में लोग उसको देखते हैं? देखिए क्या है ना, अभी जहाँ व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी उस लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे पहुँचे नहीं है जहाँ पे हम सामने वाले को कुछ बोलने दें। लेकिन ये ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री का कल्चर है। हम लोग टैबू सब्जेक्ट्स को डिस्कस नहीं करना चाहते, ना घर में ना घर के बाहर। घर में बच्चे पूछते हैं तो उन्हें नहीं करने देते हैं। अगर मैं अभी सेक्स वर्ड बोलूँगा तो कई लोगों के चेहरों पे एकदम ये आएगा, आगे क्या बोलने वाला है। तो इसी तरह से हमने पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को टैबू सब्जेक्ट बना दिया है। मुझे पहले बहुत गिल्ट फील होता था हिंदू मुस्लिम शब्द अपने मुँह से यूज़ करने में पब्लिक में, पर मैं दुनिया जितनी ज़्यादा घूमी, मैंने जितना मैं सिविलाइज वर्ल्ड में गया, मैंने कहा लोग खुल के बात करते हैं ज्यूज क्रिश्चियंस के बारे में, क्रिश्चियंस मुस्लिम्स के बारे में। दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स वी हैव, करेक्ट। और जो कश्मीर की भी है, देखिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी लाइफ में होती है एक हिपोक्रेसी को मार के दूसरी हिपोक्रेसी में घुसना, ठीक है। आर्टिकल 370 हटाना, ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग स्टफ। आई मीन मैं बहुत उसके लिए बहुत प्राउड भी हूँ। लेकिन कहीं हम फिर से वही गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई कश्मीरी हिंदू कब जाके सेटल हो जाएंगे वहाँ पे, उसका हम वेट कर रहे हैं। और इन द मीन टाइम कहीं ऐसा तो नहीं है हम उन लोगों को एम्पावर कर रहे हैं जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं को या इंडिया को डिसएम्पावर किया था। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार पॉलिटिकल कंपल्शंस, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ही डिवाइड करना है, चूज दिस और दैट। और इस दिस या दैट के वोट्स लेने के चक्कर में पॉलिटिशियंस डिस्पाइट ऑल ग्रेट इंटेंशंस
कई बार ऐसी गलती कर देते हैं जिसका हर्जाना हमें बाद में देना पड़ता है। गांधी जी ने जो मलाबार में किया था, या हम लोगों ने जो डायरेक्ट एक्शन डे में किया था, नेहरू जी ने, कहीं ऐसी गलती हम फिर से तो नहीं कर रहे हैं कि आज 370 हटे 5 साल हो गए और 10 साल बाद हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाए कि कोई हिंदू वहाँ रह नहीं सकता। एंड वाई कश्मीरी पंडित्स, वाई नॉट विवेक अग्निहोत्री, वाई नॉट यू, वाई नॉट एनीबडी एल्स फ्रॉम इंडिया? क्या आपको कलकत्ता जाने के बारे में सोचना पड़ता है? क्या आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के बारे में सोचना पड़ता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है, तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, जुडिशरी की, गवर्नमेंट की, पुलिस की, करंट गवर्नमेंट की नैतिक मौलिक जिम्मेदारी है। और खासतौर पे उस सरकार की जो धर्म की बहुत बात करती है, धार्मिक जिम्मेदारी है कि हर हिंदू को ये स्वतंत्रता, विश्वास और हिम्मत होनी चाहिए कि वहां जाके वो बैठ के आराम से अपना घर बना सकते। नहीं कर सकते। मैं भी गया था वहां पे। शंकराचार्य की सीढ़ियां 630, कितनी सीढ़ियां आपको पता है? नहीं, 600 कुछ है। तो वो सीढ़ियां चढ़ने में ऊपर मेरे साथ 40 लोग थे सिक्योरिटी के। मैं शिकारा में अभी हम लोग गए थे, मैं और मेरी वाइफ, 4-6 शिकारा सिर्फ सीआरपीएफ और तरह तरह के लेवल्स ऑफ पुलिस के साथ चल रही थी। ये हालत है कश्मीर की। फिर हम अपनी सोलो फोटो खिंचाते हैं जो देखने में बड़ी सुंदर लगती है और आप कहते हैं वाह वाह क्या बात है। टूरिस्ट को कश्मीरियों ने कभी भी नहीं अटैक किया। इवन जब वहां पे मैसिव टेररिज्म चल रहा था, कभी किसी कश्मीरी ने नहीं किया। और एक वर्ड होता है इस्लाम में जिसका नाम है अल तकिया, कभी भूलिएगा नहीं उसको। सबसे बड़ी गलती आप करेंगे, भूल जाएंगे तो। माई पॉइंट इज, आज हमारे पास सारा पावर है, सब कुछ है, लोग हैं, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। क्या ये 140 करोड़ लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि जहां से आपका सारा का सारा ज्ञान केंद्र जो था, आप तो जानते हैं, सर जानते हैं, जो ज्ञान केंद्र है, नॉलेज सेंटर है इंडिया का, वहां पे आज हमें जाने की अगर इजाजत नहीं है तो हम में क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम उसको चेंज कर सकें? अपीजमेंट जस्ट चेंजेस फॉर्म्स, बट एज लॉन्ग एज इट स्टेज, इट इज लाइक अ स्नेक इन द रूम। अशोक जी, मैं और विवेक जी क्या जा सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं? नहीं, पक्के तौर पर जा सकते हैं। मैं जाता हूँ, मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और मैं बहुतों को लेकर जाता हूँ। दिल्ली से भी तमाम लोग मेरे साथ गए हैं। कभी रह सकते हैं घर, बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। मैं कल जाने को तैयार हूं। कल रजिस्ट्री कराते हैं आपके नाम। मेरा प्रश्न, मैं विवेक जी की बात का ही आगे बढ़ा रहा हूँ और आपके प्रश्न का उत्तर जोड़कर कह रहा हूँ। देखिए, जो याना ने बताया अभी, पंडितों को बचाने की जो कोशिश हुई, उसमें एलडीसी की नौकरियां निकाली गई, प्राइमरी स्कूल के टीचर की नौकरियां निकाली गई। उस योग्यता के जो लोग होंगे वही अप्लाई करेंगे ना। तो जैसे जैसे वहाँ पर विकास के अवसर बढ़ते जाएंगे, जिस दिन सॉफ्टवेयर पार्क खुलेगा और 500 कश्मीरी अपने घर वापस जाएंगे, जिस दिन और ऐसे इन्वेस्टमेंट आएंगे उस दिन और लोग जाएंगे, नई इंडस्ट्रीज आएंगी, हाई टेक्नोलॉजी, एआई का वहाँ काम शुरू हो जाएगा, टूरिज्म आज बढ़ रहा है, वहाँ के लोग जा रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे अवसर बढ़ेंगे कोई भी जाएगा। दूसरी बात, ये हमारे कहना शायद 20 साल पहले ठीक था कि कश्मीरियों को वापस जाना चाहिए, ये एक बात है। तकनीकी रूप से क्योंकि 370 के अपने आड़ में प्रभाव थे, 370 का अपने आप में न अच्छा था और न बुरा था। 370 की आड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी गई थी जिसके कारण यहाँ से लोग जा नहीं सकते थे या उनके रास्ते में बहुत बाधाएं थी। इसलिए चूंकि कश्मीरी समाज के लोग वापस जा सकते थे, वो पीआरसी होल्डर्स थे, इसलिए उनसे हम एक अपेक्षा करते, अच्छा था। लेकिन 370 इनऑपरेटिव होने के बाद भारत के वहाँ जाने की जिम्मेदारी है, ये कश्मीरी की जिम्मेदारी नहीं कि वो वापस जाए। पूरे भारत का संविधान वहाँ लागू हो चुका है, पूरे भारत की जिम्मेदारी है वहाँ जाए, भारतीयता के पहचान के साथ जाए और उसको जाकर भारत बनाए। ये भारत का सवाल है, मैं पहले भी कहा, ये कश्मीर का सवाल है ही नहीं, ये भारत का सवाल है। भारत को वहाँ जाना होगा, उसको भारत बनाना होगा। और आप सब जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी गई हैं, सैकड़ों की संख्या में गई हैं, लोग रहे हैं वहाँ, उन्होंने जाकर मकान खरीदे हैं। जो कश्मीरी समाज के लोग थे वो भी गए हैं, जो कश्मीरी नहीं है वो भी गए हैं, और सब वहाँ के विकास में योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं केवल एक उदाहरण से अपनी बात कहता हूँ, हालांकि घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं अपवाद हैं। अगर साल में 28 लोगों की हत्या हुई है तो गुड़गांव में इससे ज़्यादा की हुई है। सर ये आप इसको ऐसा ना लेकर, एक केवल उदाहरण देता हूँ, हम में से कुछ लोग बिहार से जुड़े होंगे और वहाँ की पहचान मालूम होगी। श्रीनगर के हर प्रमुख चौराहे पर आज एक भूजा की ठेली है,
जो चना मुरमुरा वगैरह भून कर बेचते हैं, तो उसके ग्राहक भी उतने वहाँ पर हैं, वहाँ पर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जी रहे हैं और वहाँ के विकास में योगदान दे रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। हम भी जाएं, आप सबका स्वागत है, मेरे साथ चलिए, मैं निमंत्रण देता हूँ। अब हम सब जाएंगे विवेक जी, और आधी बात सबको भूख लगी वहाँ करेंगे। मैं सुधांशु जी को आमंत्रित करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर एक बड़ी भारी विषय को बहुत हल्के में हम लोगों ने कोशिश की, मजाक में नहीं, लेकिन उसको हल्के माहौल में गंभीर बातों को बात करने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद। एक तो सब भोजन के लिए भी आमंत्रित हैं, बाहर भोजन है। विवेक जी, आपने कहा कि अब परेशानियां बहुत हो रही हैं और कई बार मैं भी सोचता हूँ कि ये क्यों कर रहा हूँ। तो मुझे एक, जब बचपन में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो एक कहावत मैंने पढ़ी थी, वो थी, पीपल एग्जिस्ट, ओनली अ फ्यू लिव, यू चोजन टू लिव। मैं आज बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात फिर कहना चाहता हूँ, क्योंकि सब कश्मीर वाले हैं। मुझे अभी भी लगता है बड़ा सिंपलिस्टिक नैरेटिव बनाया हुआ हिंदू मुसलमान का। कश्मीरी पंडितों का भी बड़ा सिंपलिस्टिक नैरेटिव बनाया है। ये 370 आया कैसे था, ये 35 आया कैसे था, कभी इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। ये देखिए, हम लोग क्यों चीज़ें ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग सब बड़े पॉलिटिकली करेक्ट बात करना चाहते हैं। ये वैसे ही है कि जहाँ दिल्ली के 84 सिख राइट्स के बारे में कभी ये चर्चा नहीं होती कि ये राइट्स जब हो रहे थे तो जनता ताली क्यों बजा रही थी, क्योंकि क्या खौफ था। वैसे ही जब मैंने कहा 370 के बारे में बात होती है और 35A के बारे में बात होती है, दोनों आए कैसे थे, इसके पीछे मंशाएं क्या थी, कौन अपनी हेजिमनी को परपेट्रेट करना चाहता था और कैसे करना चाहता था। मैं खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगेन दिस इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। बट कश्मीर की एक ट्रेजेडी और है जो फिर हम नहीं बात करना चाहते। वहां के स्टेटस को के पीछे इतना बड़ा एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है, उसमें सब शामिल थे। ये वो हमाम है जिसमें सब नंगे थे और कोई नहीं चाहता था कि चीजों के समाधान निकले। मैं इसलिए थोड़ा बधाई देना चाहता हूं 370 के हटाने के पीछे, क्योंकि उस स्टेटस को तोड़ने का जज्बा और उस स्टेटस को तोड़ने की हिम्मत जो दिखाई गई, वो काबिल तारीफ है। बहुत चीज़ें हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में। शतोष जी भी बैठे, सब लोग बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं अपनी WIF की तरफ से अपना आभार व्यक्त के लिए अब मैं श्रीमती जयंती रंजन जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो आगरा शारदा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, और हमारी डायरेक्टर रुबीना मित्तल जी, जो हमारे पैनलिस्ट का फेलिसिटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं बसंत जी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारे डायरेक्टर हैं WIF के, कि एक वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। थैंक यू हिमांगी जी। I think I am the person who's now standing between you and dinner, which is being served outside. So, but I'll only take 2 minutes of your time, क्योंकि हम भारतीयों की सभ्यता में एक कस्टमरी है कि जितने लोगों ने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है, उन सबका धन्यवाद देना अति आवश्यक है। So on behalf of World Intellectual Foundation, I would like to express my deepest gratitude, starting with Honorable Shri Manoj Sinha ji, who has sent his blessings for the event through a video message. I would like to thank our guest of honor, Shri August Indra Udayan ji, for gracing the occasion with his presence and enlightening us with his infinite wisdom. We have been fortunate enough to have such a distinguished set of panelists for both our sessions. I would like to thank Dr. Swapan Dasgupta, Dr. Meenakshi Jain, Dr. Anand Ranganathan, Shri Sai Deepak, and Professor Heeraman Tiwari for holding the audience spellbound with such a vibrant discussion on how does
the historical narrative contribute to national pride. Our second panel was equally thought-provoking and insightful. I would like to thank the panelists of the session, Shri Ashutosh Bhatnagar, Shri Vivek Agnihotri, Ms. Yana Mir, and Dr. Shuchi Yadav for making it such a lively session. I would like to extend a special thanks to all the trustees and advisors of the foundation for their unending support and guidance to the team in all our endeavors. I also extend my heartfelt gratitude to the entire team of WIF who worked tirelessly throughout to make this event an overwhelming success. कोई भी समारोह अतिथियों के बिना अधूरा रहता है. I am extremely grateful to everyone who came and participated in the inaugural edition of Hum Bharatiya today. We hope that you enjoyed the event as much as we did in organizing it. This has truly been a remarkable evening made possible by your presence. I will now request everyone to please proceed for the dinner, which has been served outside. Thank you.